ताकि ये एक वो बने। Authoring and reviewing scholarly articles in research journals. This is the topic. I like this statement, which is from Wilson Menzler, that if you steal from one author, it is plagiarism, and if you steal from many, it is research. So how do you represent or present your good information which you get from the different sources in a very, इस पे भी थोड़ी बात करेंगे, no research without action and no action without research. So that is normally called action research. I have written often several times, every word I have published, my pencil outlasts their erasers. So you correct yourself, correct your sentences, correct your everything. And many times it takes sometimes months to correct your presentation, to correct your organization of your paper. Idea, research, discovery, publish, and repeat. So this is, you need to have a good idea, good research, discovery. The pain of unpublished manuscript is akin to the trauma of being an unborn. जिस तरह एक बच्चा जो पैदा नहीं होता उसकी तकलीफ, वो जो पेपर आपका जब तक पब्लिश नहीं होता ना, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ वेरी बिग ट्रबल फॉर यू, और दुख भी होता है जब आपको रिजेक्शन आती है, फिर आपका उस पर एक बहुत बड़ी, तो इसका मतलब ये है कि when you submit, it should have a very good hard work so that it is having a less chances of rejections. You can live a life of past regrets, or you can live in the present and define the future. या तो आप ये कहे जी फला मैंने गलत किया, फला मैंने गलत किया, तो उसके साथ आप जिंदगी गुजारे, या फिर ये कि आप आगे देखे और आप, research is what I'm doing when I don't know what I'm doing. It's very famous quotation of Werner. We need to publish because there are many, we try to enrich the body of knowledge in our discipline. We want to disseminate the research result for the benefit of the society and the communities, and also for the self-achievement and gratification. It's important to continue publishing. And if you don't publish, you get perished. Your knowledge perishes, your innovation perishes, your creativity perishes. So this is very interesting that Professor Mackett did not publish, so perish. So you may be a living professor, but if you don't have the good track of publication, then certainly you will not be a living professor. So likha hua hai na, it is publish or perish. तो उसको वो the professor साहब को उन्होंने बांधा है कि जी आप लिखते नहीं हैं तो. Now, different types of review papers, papers types. Review paper is the most uncommon in the sense that you need a lot of things to review the paper and to see that what has been the historical development of that particular area. And normally this area is sometimes controversial, debatable, and sometimes very innovative. So you would like to see that how the body of knowledge has been starting from the first paper, which is a hallmark paper of that field, to the contemporary level of knowledge. So review paper normally involves maybe more than 200 or 300 papers you have to review, and it is the most critical way of looking at the. So review paper is normally, it's not very easy in the early stage of your career. But when you go, for example, to 10 to 15 years of your academic life, then you try to learn that how can you review the research papers, and based on that, you hierarchical can develop the current state of that knowledge. So the review paper is normally a review. The topic is important. For example, the climate governance or climate policy is as a new field, and you want to see that how this climate governance, or how last day I was interviewed by Al Jazeera, and we just discussed that why this climate policy and governance is now important in the developing countries, and why the world should pay a fee or a subsidy or a cess to the developing countries for the disaster which has been inflicted due to the climate change, because we are not the response. So iske liye advocacy, governance policy, you need to write a lot of review reports. In-depth literature review. When I was doing my PhD in engineering, the first hallmark paper was written by Rector in 1897.
Just imagine, which was written in German. And I had a very difficulty in translating that because the English version was not available. But that was the first civil engineer who pointed out the phenomena of shear strength in concrete, because earlier the engineers didn't know. So certainly when you are writing a review paper, you cannot neglect the hallmark papers. The hallmark papers are those papers which turns the body of knowledge to a new direction. तो उसके अंदर रेक्टर का, फिर विषयों का, फिर 3-4 बड़े hallmark paper थे, stages थे. So when you are writing a review paper, you have to understand what is the hallmark paper which has changed the direction of the body of knowledge. It may contain the survey results. The research papers, we all know that there can be experimental research like we do in the engineering and also in the environmental sciences. Then maybe qualitative, which has different tools like surveys and focal group discussions, interviews, and many others. And then there might be quantitative, which involves some simulation, some scaling and this. Now, the experimental research is very common. We have some laboratory work, and then there is some field experiment like we do in the food sciences or agriculture, and then there might be some hypothesis. We develop hypotheses and test these hypotheses against in the qualitative research, we all know that the researcher to study the social and cultural phenomenon, and that is very common in the social sciences, the humanities, because the different theories and models are tested based on the qualitative data. For example, the case study research, ethnography, these are some of the examples that will have some qualitative research. Qualitative data sources include observation and participants' observations at fieldwork, interviews, questionnaires, documents and text, and the research and impressions and reactions. So there is a very good book, if you want to read this, published by Sage, about the qualitative research in business and management. This is by Mears, which is a hallmark paper. And you can get some information from this website, which is more about the qualitative research. In the quantitative research, most of the time we go for experimental work, and we have the surveys, which may include the questionnaire survey, different kind of surveys. We use different models like econometrics models and different kind of statistical models. And for this, you can visit this very important ICE World section on quantitative positivist research, Straub, Befanki. एक बड़ी अच्छी किताब है. So you can work. It's more like engineering, but anyhow you can do like that. For example, when you write a paper, you mostly get from your own results like temperature variation in high slopes, drilled shaft concrete, and blah blah blah. So these are the first one is engineering research. The second one is development of decision support system using data warehousing to assess builders and developer in the site selection. That is a qualitative research, because you will have a lot of interviews, structured interviews, and kind of observations, studies, and the quantitative, like the questionnaire survey on bidding in construction, and you can have a lot of quantitative survey. And the current papers in most of the research journals, they like the mixed methods most, in which you incorporate both the qualitative and quantitative, because just having a questionnaire survey is not sufficient to publish your paper. Rather, most of the now many journals regret to publish the results of Google survey. They would tell you that we are not interested in Google survey because it's a randomized kind of thing in which you cannot ascertain whether the sample has been relevant or not. So if you just look at the 5 very important sections of any thesis, that makes normally your paper, that your literature survey, your research questions, methodology, results, and conclusions and recommendations.
And normally this is also the hierarchy of your research paper. Now the case studies, which is more common in the qualitative research, that is generalization from one or more cases in which we normally share the lesson learned. And it's really not very easy to draw the conclusion from the case study because there may be a lot of subjective information. People may not be having the kind of conclusion you agree. So normally we, in this kind of case studies, we have a different kind of conclusions and different varying kind of people. For example, this was a paper with Linda, operations management for engineering consulting firm, a case study. So you can have a lot of case studies, for example, in different fields. Now, beside the research paper, we have technical notes, which is normally not more than 3,000 to 4,000 words, and a good research paper is normally 6,000 plus words, up to 10,000, and a research note is normally 3 to 4 pages, a maximum of 4,000. And normally we give our experiment result. There is not a long literature review. There is no hypothesis. So most of the time you have the research data you share with the people, and that becomes kind of more information about the result of research rather than the gap analysis or the hypothesis and things like that. The discussion is normally, you see that in good papers, you would see that there is a chapter which is discussion, which normally discusses the results which have been published in the earlier issue of the journal. And then we have forum articles which are not refereed, and people have their comments on. So some journals may be having some forums also. Now, why are we writing a particular paper? It's very important. The purpose of your paper is not only just to have a paper published. What is your purpose? Whom you want to address? What impact you want to create in terms of your achievements and in terms of the societal. So the paper reporting research must have a clear purpose. If you don't have why you did the research or why you are writing the paper, what chance does the reader have to understand what you are trying to achieve? आगे इस पे बात करेंगे that why storytelling is very important. You have to create a story in the paper that create the interest of the reader to go through your article. If you just start from your objective and things like that, then definitely the reader would not be able to get the interest you want. So simplicity, don't go for very technical jargons. No need to have very technical. मैंने देखा है लोग कोशिश करते हैं कि जी कई synonyms में जाके एक सब आसान चीज की कोई मुश्किल. Don't go for this. Be very simple in life, in reading and writing. You can be a very good author. And try to have small sentences. A sentence not more than 1.5 line. Melo dekho sentence, then another comma, then another comma. वो 4-5 line का एक sentence जिसको वो अपना वो वक्त ही को देता है. There is no, आप भूल जाते हैं कि what. So try to break down your sentences, long sentences, into 2 to 3 sentences. Short, and it ideally should not be more than 14 words or 13 to 14 words to be very, and not more than 1.5 line, if maximum 2. Lekin I always prefer to have 1.5 line of sentences. अब अगर मेरी वो देखे writing तो मैं बहुत छोटे sentences. This is very hard. So that the interest of the reader must be retained. The interest of the reviewer must be retained. So the theme, what is the subject matter? What is the topic, which is normally a question in the form of research question, and the title of the paper is coming from this. You have to have a storyline. How will it start and how will it end? And how does the story flow? This is really very important when you are writing a book or a social science. Now the theme, for example, how can cloud computing revolutionize the construction industry? This can be, how can the metaverse, or how can the G6 or I'm just talking of the computing, how can the social
media can impact the social networking. How can the social media impact or change the society? This can be a theme in your mind, and this would come from your own ideas. Us ideas se fir aap information technology and integration in the construction industry. This can be another that how the construction industry is. I have taken it from the engineering presentation. Selected modular construction were traditional techniques, challenges of integration. So these are some of the themes which can be further expanded to the research and research papers. Now the storyline is very important. For example, one of the storylines, construction has gone global. Ab dekhiye jumla kitna chota hai, but you look at the you just look at the theme he wants to. इस जुमले को अगर हम ये भी कहे ना कि बड़ा बनाना चाहे तो आप लिखे जी construction involving a lot of transboundary activities and blah blah blah. But उन्होंने कहा construction has gone global, बस, which is a very comprehensive word to understand that. Consequently, new challenges have emerged. दूसरा जुमला देखिए, less than half a line. The challenges are both in the very design process, that is technical, as well as in collaboration is needed in the construction team or projects. What is the role of ICT in meeting these challenges, both in design and collaboration? How does or can ICT impact these challenges? So this is the storyline. This can be another storyline. The construction is the field is facing the new challenges in general. How has ICT helped to meet these challenges or can help meet these challenges? These challenges are magnified in global context. Our globalization is broad in addition. So this is just a storyline which you start normally to create the interest of the reader, because your first 3-4 sentences are very important to attract the reader. And if your storyline is not attractive, then definitely you will not be creating interest of the reader. तो इसलिए वो जो कहानी का पहले चंद जुमले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप इंग्लिश में लिखते हैं, चाहे आप उर्दू में लिखते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स के लिए पेपर लिख रहे हैं. Now the title of papers, इस पे हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि it should not be typically more than 14 or 15 words. Even 20 words is also very large. और अगर आप समझते हैं कि तो फिर उसको दो करें कि जी पहले में आपका मेजर थीम आए जी, और सेकंड में आपका केस स्टडी अब फला. तो यहाँ मैंने कई दफा साइनॉप्सिस वर्कशॉप में आपको जी बड़ा 3-3, 4-4 लाइनों का हमारा टाइटल बन जाता है, which is not. So for example, the development of a decision support system using data warehousing to assess the builders and developer in site selection. So this is one of my very good friends and mentors, Dr. Irtishad and Dr. Salman. One is in Florida International University, the other is in Auburn, and they're very celebrated researchers. Now the abstract should have at least 4 to 5 things, and most of the journals would recommend not to have more than 200 words, but some journal would tell you to have the extended abstract also, maybe 500 words, which is very rare. But the Elsevier journal normally would tell you, or the Springer will tell you to have not more than 200 or 250 words. Now in the 250 words, you have to tell a story which is very attractive. So good, ये जो 4-5 चीजें हैं आपके abstract के अंदर जरूर आनी चाहिए. What is the purpose? This research has been done to to solve this problem. What is the design methodology and approach? What methodology? It was a mixed mode research in which you have used a questionnaire survey with the structured interview and this. And then what are the major findings? If there are some limitations, that it is only incorporating the construction industry of Gilgit-Baltistan, so that can be the limitation of the, and then what is the practical implications or recommendations which you normally have. If you give the social implications, it would be, so the recommendation, and so 5 very important parts you have to seek in the abstract if you are a reviewer. The first is the problem, the second is the methodology, the third is analysis and results or findings, the fourth is your recommendations. तो ये 4-5 चीजें एक अच्छे abstract में अगर आप नहीं देंगे, the abstract would not be attractive. But again, this is a story you have to write. Now the introduction,
is another very important part in which you try to see that what is the research gap and why you are writing this paper. So within introduction, for example, you try to see that what is the paper about, what motivated you to write this paper, what is the objective of this paper, what is the scope, organization, problem statement, and research questions. So normally within the introduction, sometimes you may create one or two sections if you like, or you can go with the same. So the existing body gap of the research you would like to identify in the introduction, and at the end of your sentence, you would like that to, in order to solve these questions or in order to answer the question, this research has been undertaken. There are many templates which are prescribed by the publishers, by the editorial boards, but normally they have the introduction, the trends. We are talking of the ICT potential in the construction industry, the state of construction industry, challenges, 3 levels of integration. तो ये पेपर से मैंने उठा लिया था some of the sections. The literature survey, which is normally sometime we write in the introduction, and sometime we can make it a separate section within the introduction, like 1.1 is a literature survey. That must address the 2 questions: that what is the current state of the topic, and what is the current state of the method you are using for research. So you have to explain both the topic, why this is important for the research, and the method you have used, how this is innovative for the research. Because if you are using a method which has already been used, and I see a lot of things like this, तो फिर वो कोई आपने एक वैली से एक दूसरे वैली में वही काम किया, तो ये कोई इतना बड़ा रिसर्च नहीं है. गो के इससे एक रिसर्च, अगर आप उसके उस मेथड के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, दैट वुड बिकम अ गुड रिसर्च. सो ट्राई टू कि जी जो मेथडोलॉजी किसी और ने इस्तेमाल की है, ऑन द टॉप ऑफ दैट व्हाट कैन आई एड सो दैट इट बिकम्स अ बिट न्यू एंड इनोवेटिव वर्क. Then methodology, then finding results, validations, conclusions, and main contribution of the paper in future research. So normally, so if references, normally the most common is APA style, and you can go to this. There are some journals have the Harvard style, and some journals have their own specific style also. So you have to go by the conditions of, for example, MDPI के जो journals है, they have very specific kind of references, referencing. It's not APA. They have built. इसी तरह जो हमारे Springer के कुछ journals है, उनके भी. So there are journal specific. If you have some questionnaire which is to be part of the appendices, you can put that. Normally abstract is written at the end but placed at the beginning. तो जब सारा काम आप करते हैं तो फिर abstract लिखा जाता है, या synopsis जो आप लिखते हैं उसको आप abstract में convert करते हैं, which becomes your abstract of work. एक चीज हमें ये भी सामने आती है कि many captions are missing, many आप जो मिसाल के तौर पे आपने टेबल तो डाल दिया, टेबल पे डिस्कशन नहीं, टेबल को साइट नहीं किया, आपने एक पिक्चर दे दिया, उस पिक्चर को आपने डिस्कस ही नहीं किया. तो नॉर्मली इट शुड बी डिस्कस्ड जो आपने डाला है, क्योंकि नॉर्मली वी रिफ्लेक्ट द रिजल्ट्स इन द टेबल्स. तो इसलिए इसको डिस्कस, कुछ पेपर में आप देखते हैं कि वो सेपरेट कहते हैं रख के, कुछ पेपर कहते हैं कि जहाँ पे टेबल्स है वहां पे आप. तो but you have to follow the method given by the advice of the paper. Now the findings, the purpose of research is to reach to a conclusion. The only purpose of publishing is to present these conclusions. No conclusion, no purpose, no reason to publish. So conclusion is very important, and normally I see when I review the paper that many things in conclusions have been included in a passionate measure.
In a patient admission mean that it becomes like more like a patient of a person rather than the research findings. So conclusions should not, मिसाल के तौर पे अगर कोई कहते हैं कि जी environment के एक हमने किया, for example हमने particulate matter पे काम किया और हम लिखते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आलूदगी बढ़ रही है. Now this cannot be a conclusion. ये तो एक fact है. So the conclusion should be derived from your own findings. तो जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है तो ये तो सबको पता है. Have you worked on that? Is your research or thesis worked on that? So your conclusions should be derived from your major findings. लेकिन normally conclusions are not quantitatively described. Findings में हम quantitatively description देते हैं इतना percent इतना. Conclusion में हम एक general impression देते हैं कि जी the global temperature is rising or the local temperature is rising in this. Based on the research. Weak conclusions. Some authors write papers with long description of literature, detailed description of research method, and so on. पहले पैराग्राफ में आप इतना लिखते हैं कि this paper was this research, this ये हमने किया ये. It should not be more than 4 lines. उसके बाद the following major conclusions are drawn. अब conclusion में वही कहानी आप दोबारा लिखते हैं कि जी हमने इसलिए किया, इसमें ये लोग हमने किए, फला किए, तो it would become really very boring. Should it be any vertical connection between the abstract and the conclusion? Yes. Actually, conclusion is part of your abstract. मैंने अर्ज किया ना कि 5 चीजें आपके abstract में जरूर आनी चाहिए, जो आपके पेपर के 5 sections हैं. For example, introduction, problem, methodology, analysis and finding, and conclusions and recommendations. आपको हर चीज पे 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी पड़ती है. So if your abstract is not logically connected with the conclusion and conclusion is not connected with the, nobody will. देखिए, the first thing you receive is normally the abstract. जब भी आप रिव्यू करते हैं ना, उसमें अगर आपको ये पता नहीं चलता कि ये एक इंटरेस्टिंग काम है जिसको रिव्यू करने की जरूरत है, इसलिए many times the reviewer, the editorial office would send you the paper, the abstract first. So if your abstract is not telling the story which you have crafted in the paper, then certainly it will create a lot of questions. There should be a logical relation. There are some checklists which you always place in front of you. For example, your reader should be able to understand why you undertook this research. What was the starting point of the research? What was your research approach? What were your conclusions? What were your practical implications? You are not writing to reproduce your research report or PhD. ये भी आप जरा ज़हन में रख ले कि PhD writing is a quite extensive and exhaustive process. जबकि पेपर में आपने एक बड़ी limited space scope में आपने एक बड़ा, तो writing a research paper sometimes is much difficult. You are not how to demonstrate how much effort, pain, anguish, and suffered. Or look at this was though not possible, but we have put a lot of efforts and pressures to produce this data. Now the reader has nothing to do with it. ये आपने PhD की तो हर आदमी PhD से जो गुजरता है anguish और difficulty, तो nobody would give you credit of writing your own कि जी मैं सीट का स्कॉलर थी, फिर सीट वाले जो है वो हो गए और सीट वाले भाग गए, वो कहेंगे this is some story which I don't want to have any interest. तो ऐसी कहानियां अपने दिल में रख के, अपने सीने में रख के, don't share these story with the people because that discredit sometimes in the interviews. Even अगर कोई आके कहते जी रात को मेरा हादसा हुआ, फला हुआ, we normally discredit it in interviews because these kind of people want to have the sympathies of the house without producing substantial evidence. तो इसलिए कभी ये न कहे कि जी मैं आ रहा था तो वहां मैंने ये किया तो मेरी गाड़ी खराब हो गई. People have nothing to do with that. ये सारे के साथ हो रहा है, सबके साथ ये चीजें होती है जिंदगी में. You should be clear and concise. Don't write in long-winded way. मैंने पहले भी बात की कि बहुत कामें डाल के और वो जुमलों को घुमा फिरा के और passive voice, talk the action verbs जो है ना उसको use करें. Too many words should be avoided. Overly complicated sentences or paragraphs. Good writing is short writing. The longer it is, the less you are explaining.
तो इस पे भी हम चाहेंगे कि डॉक्टर आसिफ साहब एक शॉर्ट राइटिंग पे, एकेडमिक राइटिंग पे भी कोई बंदा देखे कि वो हमें जो प्रेस राइटिंग है उस पे कि किस तरह एक कूजे को आपने समंदर को कूजे में समाना है, विच इज एन आर्ट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है जी, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक बड़ी बात जो करना चाहते हैं उसको किस तरह चंद अल्फाज में वो करें। Now, the structure is not very recommended by the journal. There might be the major section, the subsection. Uh, so let the reader understand what you are writing. In simply reading the heading, they won't have the detail, but will have an understanding. मेरा एक बॉस था और वो मुझे कहता था कि your subject letter of the subject line of your letter should convey the entire message. ये लोग बाज़ औक़ात कहते हैं ना invitation, subject invitation. मेरे स्टाफ को पता है, मैं लिखता हूँ कि invitation of Bala as a chief guest at the conclusion ceremony of the sports gala on this. ये थोड़ा लंबा हो जाता है. Many executives don't have time to read the entire body. And even I don't read the entire body. But if the subject line is very persuasive, then the people would understand. So your headings are very important to select. If you are selecting a good headings, it will create more interest from the long, tedious descriptions of the literature review is not required. Normally, we recommend that literature review should not be more than 2 pages. Only need the key summary points and the references. ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें एक reference, आप literature review का table create. आपने जब discuss किया, by the end of the, आप कहे कि जी ये 10, 12, 15 पेज ये फलाने शेरवली एटल ने ये किया, इनकी मेजर फाइंडिंग ये थी, फला ने ये किया, इसकी मेजर फाइंडिंग. So normally it is more advisable that if you have a large number of papers which you cannot produce in the literature review, it's more advisable that you take the hallmark papers and based on the major shift in the body of knowledge you can refer to कि जी उन्होंने इसके अंदर ये एक पैरामीटर भी ऐड किया. So based on that, they would identify your research gap. To reproduce the literature is only to print what has already been published. अगर आप चीजें वही चीजें दोबारा लिख रहे तो आप वही चीजें जो पहले किसी ने पब्लिश की है या कही है वही चीजें अगर आप दोबारा लिखेंगे, people, I mean, good reviewer will not have any interest in reading that. You may have suffered greatly in conducting the review, but that is no reason why you should pass the suffering on to the readers. हाँ, आपको शायद एक पेपर के रिव्यू में आपने 50 पेपर पढ़े, 25 पेपर पढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे पेपर आप लिटरेचर रिव्यू में लिख ले पेपर की. आप वो इंपॉर्टेंट पेपर उठाएंगे उसमें से. और नॉर्मली जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसका भी एक टेम्पलेट हम बनाते हैं. टेम्पलेट ये है कि जी पेपर, ऑथर्स, पेपर, इसका मेन पर्पस क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी, मेजर फाइंडिंग्स क्या है. तो उससे हम एक टेबुलर फॉर्म में उस पेपर को जब हम पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि इन पेपर्स में कौन कौन से पेपर्स को अपने लिटरेचर रिव्यू में रिफ्लेक्ट करना है. एवरी पेपर इज नॉट, you read it, but it is not worthy of reflecting it because that might be some type repetition of the earlier work. तो वो इनोवेटिव पेपर्स कौन से हैं जिनको 10, 15, 20 आप अपने पेपर के लिटरेचर रिव्यू में लिखेंगे, that is very important too, and that would be the now try to avoid the verbatim copying because sometimes it can create plagiarism charges if the similarity index is more. But even if it is not more, it cannot be creative. And आज का तो बड़ा आसान है ना, you just go to Turnitin and you will find a lot of things which are having similarity. So it creates a very bad impression on the readers and on the reviewers. And sometimes reviewers give a very strong disadvantage to certain. मैंने देखा है कि some of the publisher even blacklist authors for excessive plagiarism. अब वो plagiarism intentional नहीं होती, कई दफा वो हम गलती में भी कर लेते हैं, but you know unintentional plagiarism is also plagiarism. So try to be writing your own sentences,
small sentences, creative sentences. Reusing parts of the work without attribution, you don't cite it. Self-plagiarism is again a very important that people may sometimes manipulate the results. They plagiarize their own work to produce a new paper, and republication of original work, that a work which has been already published by someone, you are trying to publish that. तो इसमें हमने बात की, ये वो बातें हैं जिस पे हम चाहते हैं कि अब थोड़ी सी हम हमारे एक चीजें डेवलप करें कि प्लेजरिज्म redundant publications, that dual or self-plagiarism, authorship issues, that people who have not played any role and just contributed a few $100 can become the authors. This is again a big issue. Fabricated data, that you manipulate the data, your own data or someone else's data, you try to change the values, the columns, the rows, and based on that, you try to see that it can be a new. इस पे plagiarism पे फिर एक और talk कर लेंगे. Unethical research and testing, that there are a lot of, for example, in psychology, in the life sciences, we have the bioethical standards. So if you are reporting a person, his picture, if he or she is not permitting, then certainly it can be an ethical issue for you. And people can even sue you for this kind of violations. So that's why we have developed a bioethical committee. And this bioethical committee is responsible to see that if there is any animals or humans related research, there must be the parameters of personal protection, security, integrity must be fulfilled. अभी हमारे पास जो रिसर्च ग्रांट्स आ रहे हैं उसमें खासकर इंटरनेशनल ग्रांट्स में ये काफी इंपॉर्टेंट है that bioethical committee should review that there is no violation of bioethics. The author agreement, the article not been published before it is current or substantially similar form. So, एक certificate अब सबने देना होता है कि जी this paper is not earlier published, nor it is under consideration in any journal. The article is not under consideration. The article does not contain any unlawful statement and does not infringe any existing copyrights. So there might be. मैंने एक paper सबमिट किया तो उस पे ये क्वेश्चन आ गया कि जी आपने जो जीबी का नक्शा डाला है ये इंडियन पेपर था तो जाहिर है उन्होंने कहा अब उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के नक्शे का हमारा पर्सपेक्टिव तो समटाइम दिस काइंड ऑफ इश्यूज कैन आल्सो पारल मैंने विड्रॉ किया आई डिडंट वांट टू पुट माय सेल्फ इन दिस डिस्प्यूट कि जी इसको अब कहां शो करें बट समटाइम यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो so try to avoid don't become a problem कोई पेपर ऐसा अगर न भी पब्लिश हो किसी और जगह पब्लिश हो तो अच्छी बात है so don't become victim of something which is not important for us the copyright is very important that infringement they have different kind of because if you are using some specific things which are not copyright which are copyright protected then certainly you have to take the permissions from the Now, these are some of the things which we resolved that they have obtained the necessary permissions from the copyright holders and to produce in their article all material, including tables, diagrams, and photographs not owned by themselves. If they are not open access, certainly then you will need to have the proof of consent has been obtained from the studies of named organization and people. If it is funded by Karakoram University, you should ethically take a permission from the OREC that I'm publishing this result. So there must be proper consent from the OREC that which can be, we encourage, but normally this is a requirement. All authors, contributors have received a final version of the article, take responsibility for the content, agree to its publication and the order of the author listed on the paper. So normally when we publish the paper, we assume that these 3 or 4 things have been fulfilled. Now, when you are corresponding with the editors, please don't engage onto the arguments. Any reviewer is not knowing you in person, nor he is against you. So he or she would assess you based on your worth. So if you are trying to counter argument something which has been raised by that will create a negative impact of your message. You can give justification
you can give the rebuttals, but you cannot argue to say that this is wrong and you don't know this and you are not aware of this fact and this and that. So try to understand that reviewer is most of the time highly learned person. They're senior professors, they're people having 20 and 30 years of publishing. So they cannot be just, you cannot just challenge their integrity. There can be some confusions which you can clarify about your results or about your writing, but that would not be challenging someone. So don't challenge the people. Listen to their suggestions very carefully. If they are, and what I have seen, that many times a paper which is rejected based on very good reviews is accepted in the other journals, which is having not very good impact. तो अगर आप 4 या 3 impact के लिए लिख रहे हैं elsewhere के, तो वो वापस करते हैं with a very good review, and you will, what if you religiously follow those reviews, that paper becomes really a very good paper, and you can then publish that maybe in a if not in Z category, in X category, and so on. So please don't waste. Don't try to say that the reviewer has wasted your time. Try to learn from the reviews. Try to see that what the reviewers have given you as a kind of suggestions. And if that paper is not published or rejected by the journal, मेरे बहुत सारे पेपर second attempt पे publish हो गए, very few in the first attempt, और वो उस journal में नहीं हुए, वो किसी और journal में. So you don't say that the reviewer has wasted your time or the reviewer has wasted your. Many people think as publishing is very difficult. No, it's very easy if you have a very good understanding of the basics. It is too easy to publish. It's again another perspective. Once rejected, not worth trying. ये भी एक मैंने किया ना कि rejection को अगर आप दोबारा review करें, it can be a very good paper. When I was interviewed for PhD, तो मेरे interview में they gave very very tough time. External reviewers ने भी मुझे बड़ा tough time दिया, और यहाँ के reviewers. And I was एक stage पे आते हैं ना, आप कहते हैं अब मैं नहीं कर सकता, PhD मुझसे रहेगी. That is the time आप do or die. And you won't believe that based on the reviews of external internal reviews, I published 4 impact papers. Just उनकी उस review ने मुझे इतना guide किया कि मैंने 4 impact papers सिर्फ उस काम पे लिखे जो उन्होंने point out. So that does not mean कि ये एक reviewer जो इतनी मेहनत लगाता है, 15 pages का review आपको भेजता है, अपना time आपको देता है, so it should not be wasted. You should learn from that. And editors have bias. मेरे एक दफा एक पेपर था, वो रिजेक्ट हुआ, खैर माइनर रिजेक्शन उसमें आई, और उसमें कहा कि जी आपने फला काम इसमें नहीं डाला. अगली दफा जब मैंने उसमें डाला तो दूसरे रिव्यूअर ने कहा कि मुझे लगता है कि पहले रिव्यूअर ने इसको इसलिए डाला कि ये उसका काम था. तो वो दोनों रिव्यूअर्स की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो मेरा पेपर पे पब्लिश नहीं हुआ, बिकॉज इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. So some reviewers have a very little bias, but generally the reviewers are unbiased. They don't want कि जी वो मेरे काम को आपने साइड किया या नहीं किया, या जो है मेरा काम नहीं है तो ये अच्छा काम नहीं है. I think we shouldn't have, अगर हमारे पास reviews. The second part for next 10 to 15 minutes or 20 minutes, when we are a reviewer, and reviews आपके पास mainly आते हैं when you are at least 10 years of your expertise. एक तो ये कि कोई पेपर जो आपसे relevant ना हो straight away उसको regret करें, because if you don't regret, you waste the time of the author. तो आपको अगर समझते हैं, और normally they would send you an abstract, और उस abstract को आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरी expertise है कि नहीं. अगर नहीं है तो आप कहें कि जी डॉक्टर शेरवली साहब का, डॉक्टर रजाक का, डॉक्टर सादिक साहब का जो है relevant experience है, ये उनका email है, काइंडली उनको भेजें, मेरा ये expertise नहीं. Instead of putting yourself in a thing which you don't know, and ultimately you come up with an excuse that I don't know it, it's better. तो ये उसका hierarchy है. ये जर्नल है उसका, उन्होंने कहा कि acceptance जो है वो 85%
इससे आगे चले जाते हैं 15%, तो रिजेक्शन रेट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। द रीजन इज कि हमारे पास इस वक्त जो पेपर्स बहुत ज्यादा लिखे जा रहे हैं, तो इस वजह से रिजेक्शन रेट इज आल्सो वेरी हाई। इज अराउंड ग्लोबल एवरेज इज अबाउट 80 to 85% ऑफ द पेपर्स आर रिजेक्टेड। इन सम जर्नल में भी इट्स अ बिट मोर, लेकिन ये है कि कुछ जर्नल्स की बहुत सारे इश्यूज भी है, कि वो खासकर वो जर्नल्स जो ओपन एक्सेस, मैं वैसे ओपन एक्सेस में पेपर पब्लिश करना अपनी तौहीन समझता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। बिकॉज व्हेन आई से दैट पीपल आर गेटिंग मनी फॉर पब्लिशिंग, दैट इज नॉट तो। और नॉर्मली भी क्योंकि इस वक्त खासकर कुछ पब्लिशर्स के 3,000 फ्रैंक्स लेते हैं, इट बिकम्स अ रियली बिग मनी। तो वो गोल्ड एक्सेस जिसको कहते हैं, तो आई ऑलवेज सेड मुझे ओपन एक्सेस में मत करें। The funding agency, the academic institution, the author and co-authors, the publishers, the editors, the reviewers, the libraries and readers. So these are the people who are involved in the publishing process. For example, if you are doing a postdoc, this paper, can you do it? So normally the postdoc review the work of earlier research. If you are doing a PhD student, you will say like, I've been asked to review this paper, can you do it? So the student would be telling to the teacher would be telling to the graduate students. So now the peer review is important, which is used to access the, ये तीन चीजें बड़ी important रिव्यू में, या आप जब भी पेपर लिखते हैं, the quality, significance and originality. Quality in terms of presentation, in terms of structure, in terms of all the जिसको, दूसरा आपकी significance, why this work is important, why, what new knowledge is being created by this paper, and finally originality. Originality की बात कि जो भी experiment data है, जो भी चीजें आप reflect कर रहे हो, वो manipulated ना हो, आपका अपना काम हो, किसी और का। Now the reviewers are very important for good. ये डॉक्टर साहब को हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि if you really want to raise the standard of your journal, have the best reviewers. Because if you don't have the best reviewer, then definitely good articles would not be published in your journal. अगर वो आप उसको भेजे, उसके पास टाइम नहीं है या उसकी उस पर नॉलेज नहीं है, तो we need to have good reviewers for good journals. Improve the quality of published papers. Certainly when the reviewers give their inputs, the quality of paper would control in scientific communication, prevent publication of plagiarized work, ensure that previous work is acknowledged. So this is why the peer review is very important. There are different types of, for example, single blind review means that the author would not know, but the reviewer would know that this paper Dr. Asif ne likha hai. So this is single blind, that the author is not knowing that who is reviewing my work. The other is double blind, that neither the authors know nor the reviewer know about the paper. Normally you don't give your institution, and the first page, abstract page, which you give is retained by the journal office, the editorial office, and the paper is sent blindly to the third is open review, which is now very, very common, that you can suggest your own reviewer to the journal, and you know that who is reviewing my paper. And again, this is very important to be selecting very credible people who can add value to your paper. Because if you are just getting a friend who is just reviewing a work and cannot improve your work, then definitely your paper will not be well cited in the international journals. Now, to become a good reviewer, you have to write. If you don't write for 10 and 15 years, you cannot be a good reviewer. तो आप ये कोशिश न करेंगे कि आपने 2 पेपर लेके और आप रिव्यू भी शुरू करें. You will waste your time and your paper. तो 10 साल के बाद अगर आपके रिसर्च क्रेडेंशियल बड़े स्ट्रांग है, you can be a good reviewer. अब मैं देखता हूँ कि लोग जो है कि जी मैं फला जर्नल का रिव्यूअर हूँ, फला जर्नल का. I think this will create a track record in the given field. आप अपने साथ कुछ 1, 2, 3 फील्ड्स में आपका जो काम है वो ग्लोबली नजर आए,
और उसको देखते हुए लोग आपको रिव्यू के लिए काम. By doing so, you become a peer in this field. So peer is basically an expert in a field by virtue of his research, by virtue of his publications. Build online profile. ORCID का बड़ा important है, आप सबका हो, Scopus का भी हो, iSign का भी अपना एक है, रिसर्चर आईडी है जो आइस. तो ये चीजें जरूर आपकी होनी चाहिए ताकि आपका जो many good papers, journals would try to see your personal platforms. Approach and return of journal in the field of your expertise. If you want and you see that I can review a good paper, I could be a good reviewer, you can approach the journal. The journal periodically invite the reviewers from different regions, from different parts and different disciplines. So you can apply online or you can send them the co-review with a colleague. If you want, अगर आपकी अभी इतनी expertise नहीं है, तो आप अपने एक senior colleague के साथ review करें. कि वो आपको दे दे कि यार आप देख ले, फिर वो आप दोनों बैठ जाए और आप कहे कि जी ठीक है, आपने जो 2 या 4 या 6 पॉइंट्स पॉइंट आउट किए हैं, तो उस पे इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है. So just like having a mentoring from your senior colleague, you can become a good reviewer. It may take some time, but certainly you can. आपके पास एक पेपर आया, डॉक्टर अकबर साहब के पास पेपर आया, उन्होंने कहा जी आप जो है नफीस साहब को साथ बिठा दिया कि सर ये आया है, लेट अस रिव्यू, क्या चीज है इसमें आपको. So you will learn from each other as a collaborative learning. So request the senior बात वो आ गई. There is a ये जो elsewhere reviewer hub है, इसमें अपने आप को register करें, खासकर वो लोग जो senior position पे है. This is a very important hub in which you can have interaction with the different reviewers and you can learn from their expertise. First and foremost, your submission also need to be peer reviewed, so need reviewers. तो रिव्यूअर्स एक वॉलंटियर काम है. अगर आप खुद रिव्यूअर नहीं बनते तो यही प्रॉब्लम हर जर्नल के पास है कि उनके पास टाइम इसलिए ज्यादा लगता है कि अप्रोप्रिएट सूटेबल रिव्यूअर उनको नहीं मिलता. तो रिव्यूअर बनना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप एकेडमिक पब्लिशिंग को अच्छा करना चाहते हैं अपनी और दूसरों की, तो यू हैव टू बिकम अ रिव्यूअर, अ गुड रिव्यूअर. The second, many academic institutions give credit for being an active reviewer. हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कुछ जर्नल्स अपने सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट्स देते हैं, आपको अपने रिव्यूअर का सर्टिफिकेट देते हैं, आपको जो है कभी रिव्यूअर का जो ट्रेनिंग्स है उसमें आपको बुलाते हैं ऑनलाइन. You get access to new scientific results months before their publication. ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि वो पेपर अगर आप कोई PhD सुपरवाइज करना चाहते हैं तो कुछ रिव्यूज से आपको कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स का जो पता चलता है, उस पे भी आप खुद भी कुछ काम अपने स्टूडेंट से करा सकते हैं. इट माइट लीड टू न्यू इनसाइट्स एंड आइडियाज फॉर ओन वर्क. इट बेनिफिट्स योर पब्लिकेशंस. यू गेन एक्सपीरियंस बाय मेंटोरिंग योर रिसर्च. मैंने जो बहुत कुछ सीखा उसमें बहुत ज्यादा मैंने अपने स्टूडेंट से भी सीखा, उनके रिव्यूज से भी सीखा, चाहे वो MS कहते हैं PhD, because you cannot be perfect in every field. But when you do a research with your student, you learn about the new trends and new techniques which are being. तो ये बड़ा जरूरी है कि आप रिसर्च रिव्यूज भी करें, रिसर्च सुपरविजन भी करें. ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ टिपिकल जो एल्सवेयर सर्टिफिकेट ऑफ रिव्यूइंग देता है to their reviewers at the end of an year. इसमें आप लोग जो एल्सवेयर रिव्यूअर्स हब है उसमें अपने आप को जो है वो now this hub is an engagement platform for the reviewers. You can learn. अब आजकल आपने ये भी देखा होगा कि इवन इस पे जो आपका कौन सा है ये जो ISI को आपका रिसर्चर आईडी कौन सा प्लेटफॉर्म है, बबलॉन क्लैरिवेट पे चला गया, वहां पे रिव्यूज भी आपके अब अपलोड होते हैं. तो वो रिव्यूज का फायदा ये है कि जब आप दूसरों के रिव्यूज देखते हैं उस पेपर पे तो यू लर्न. सो व्हेन यू आर इन अ हब platform of reviewers, you learn from each other. Even you can create a blog
आप डिस्कशन के जिसमें आप अगर उसमें आपको कोई नई चीज नजर आती है और रिव्यू ने पॉइंट आउट की उस रिव्यू में, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट यू मीन बाय दिस डायमेंशन, कैन वी डिस्कस सेपरेटली ऑन दिस. So this becomes even because reviewers are very experienced people. And if you are part of that classroom or that hub, you can learn a lot from the reviewers. Uh, Option for volunteers to review. There's normally volunteers enables to claim complimentary 30-day scientific direct. मैंने अर्ज किया कि स्कूपर्स को किसी जर्नल सब्सक्रिप्शन आपको दे देते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं. Allowed to download reviewer recognition certificate, जो बात हमने की है, ये कुछ चीजें हैं. Now these are a couple of steps before when you step number 0. जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि जब भी आपके पास एक पेपर आए तो पहला क्वेश्चन ये कि इज इट रेलेवेंट टू मी और नॉट. इफ नॉट रेलेवेंट, प्लीज within 24 hours you should regret. It should not be placed in your email for years and years because it is wasting the time of researchers. तो अगर आपसे मुताल्लिक है तो आपके yes I can review it. If not, then regret it with thanks or refer it to some of your colleague. I'll give the colleague के डॉक्टर मेहरान साहब इसको कर सकते हैं, डॉक्टर खलील साहब कर सकते हैं. He is expert in this area because people need reviewers, journal need reviewers. So the abstract normally will be given to you. You ask yourself, will I be able to review this paper in time before the deadlines? And normally they would give you something like 4 weeks, good journal, maybe 6 weeks. And if you need to extend it further for 4 weeks, but if you cannot do that, if you have commitments, please regret it immediately so that it can be referred to the other reviewers. Will I be able to give an unbiased opinion of the paper? कोई ऐसा पेपर आ गया जिसमें आपकी नेशनल इंटीग्रिटी का, जिस तरह मैंने अर्ज किया ना कि उस पेपर पे जब उन्होंने एक पॉलिटिकल वो किया तो आई विड्रॉ. इसलिए मैंने विड्रॉ किया कि उस बास में मैं नहीं पढ़ना चाहता था कि जी कश्मीर आप कहे कि कश्मीर हमारा है, तो न उस पेपर में ये मैंने कोई आर्गुमेंट देना था. So I withdraw that paper very voluntarily instead of becoming part of any controversy. If the answer to the first three is yes and no for the last, then accept the invitation. Last one is, do I have any conflicts of interest? अभी हमने डॉक्टर आसिफ साहब को बुलाना चाहा अर्थ साइंसेस के इंटरव्यूज में, तो उन्होंने रिग्रेट किया. उन्होंने कहा कि इसमें एक कैंडिडेट मेरा पीएचडी स्टूडेंट है, सो आई शुड नॉट बी हिज एक्सपर्ट. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है. आपका कोई ऐसा कलीग है, कोई ऐसा वो है, तो वो अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप फौरी तौर पे कह दें कि इट कैन बी. The second, once you accept the review, then the general impression of the abstract, for example, look at the manuscript as a whole, general comprehension of the manuscript, language, structure, and enthusiasm. ये 4 चीजें आप देखें कि क्या एक मैन्युस्क्रिप्ट में आपको नजर आ रहे. एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो 4-5 क्वेश्चन, इज द रियल समरी ऑफ द पेपर, डज इट इंक्लूड द की रिजल्ट्स, डज इट कंटेन द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इज टू लॉन्ग, जर्नल सेट अ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स. मैंने अर्ज किया कि 200 to 250 में 4 to 6 कीवर्ड्स ये आपको नॉर्मली होते हैं, बट अगर आपको एक्सटेंडेड एक्सट्रैक्ट देना है तो 500 वर्ड्स तक भी हो सकता है. बट नॉर्मली द गुड जर्नल वुड लाइक, क्योंकि जो ऑनलाइन सबमिशन का जो स्पेस है वो 250 वर्ड्स के बाद फ्रीज हो जाएगा. सो यू हैव टू रिड्यूस सम ऑफ द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन देयर. इंट्रोडक्शन में क्या क्वेश्चन एज ए रिव्यूअर आपके ज़हन में आने चाहिए, एक चेकलिस्ट जिससे आप बना सकते. इज इट इफेक्टिव, क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड? ये तो नहीं है. कल मैं एक चैप्टर रिव्यू कर रहा था और मुझे चैप्टर रिव्यू से पता चल गया कि इसमें कोई जो एक हार्मनी है वो नहीं है. मतलब डिफिनीशन से फिर एक और जब डिफिनीशन, फिर जो आखिर में एक फिगर डाला गया था वो पहले होना चाहिए. तो मैंने उस पर ये कहा कि the organization of the chapter needs to be revisited. Number 2, local context पे आपने कुछ नहीं लिखा, आपने definition पे 2 पेजेस लिखे जी फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, फलाने. जरूरत ही नहीं है. आप एक ही common definition लिखे, 2 लिखे और उसमें आप authors के नाम लिखे. Go to the point, do point. So you have to see, suggest changes in organization and point authors to appropriate citation if necessary. Be as specific as possible when giving feedback. Don't just write the authors have done a poor job.
ये मेरे ख्याल में इट्स वेरी वेरी अनएथिकल टू राइट कि किसी के काम पे आप ये कहे कि जी उसने तो बड़ा, ये तो बड़ा फजूल काम है जी। और मेरे एक पेपर पे, मेरा पहला पेपर था, फिर 2 साल तो मेरे में जरूरत नहीं हुई पेपर लिखने की, तो वो एक रिव्यूअर ने लिखा था कि बियॉन्ड पेज वाला पढ़ा, आई डिडंट हैव द करेज टू रिव्यू इट। इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। उसका मतलब ये था कि ये इतना गंदा काम था कि so you should not write like that. Even if you don't like the work, if the work is very substandard, तो आप loves poor substandard units. आपके जी the work is though good but not up to the standards. Instead of using the negative words, you should use the positive words. Yeah, हम normally लिखते हैं कि जी the authors have given a lot of efforts, but I think the following the following observation, if incorporated, would add value to the paper. तो उसमें आप बिल्कुल उसको ठीक ठाक रगड़ा दे जो देना चाहते हैं, लेकिन ऊपर का जो आपका जो courtesy है, it should be there in the writing, because that is academic writing. It's not just exchange of words. Suggest changes in organization. Be specific when giving. अच्छा ये हो गया. The methodology, when we are assessing the methodology of the paper, can a colleague reproduce the experiment and get the same outcomes? पहला question, क्या हम अगर ये खुद करें तो ये आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो एबनॉर्मल आउटकम तो नहीं है जो. सेकंड, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू मेथोडोलॉजी कंप्लीट एंड एक्यूरेट? क्या जो मेथोडोलॉजी है वो, डिड द ऑथर्स इंक्लूड प्रॉपर रेफरेंसेस टू प्रीवियसली पब्लिश्ड मेथोडोलॉजी? Is the sample size large enough and was it selected in an appropriate way? Was the data collected in accordance with the accepted practice, and could or should the authors have included supplementary material? तो ये क्वेश्चन जब भी आप मेथोडोलॉजी रिव्यू करें, चाहे आप एमएस की रिव्यू करें चाहे पेपर की करें, ये क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए कि क्या ये मेथोडोलॉजी में ये चीजें, ये चेकलिस्ट के तौर पे it can help us. Actually, this part of the Ellsworth workshop online जो मुझे उन्होंने, because I'm Ellsworth reviewer, तो उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग दी. I thought it's very important to share with the colleagues. Now, when you are reviewing the results and discussions, for example, what improvement you would suggest in the way the data is shown? Comment on journal logic and justification and interpretation. Logic is very important. जब आप कमेंट करें तो आप वो बातें लॉजिकली करें जो पीछे से आ रही है. If you create a new argument which is not produced within the body of paper, that would not be a good review. Comment on the number of figures, tables, schemes. कौन सा फिगर आगे होना चाहिए, कौन सा पीछे होना चाहिए, रेजोल्यूशन खराब है, कैप्शन सही नहीं है, साइटेशंस नहीं की गई, ये सारी चीजें. Write concisely and precisely when changes you recommend, preferably with page and line number. But normally when we review the paper, we have pagination and line number, so you refer to the line number के line number फला में ये mistake है, इसको explain किया जाए, flag line this to this, so that the author is able to get the clear message of reviewer. List suggested style, grammar changes and other small changes separately where you have structural grammatical improvements. Suggest additional experiments or analysis if you need to include in the paper. Make clear if there is a need to change or updates. Ask yourself whether the manuscript is worth being published or not. So this is a very important question. Now about the references and tables and figures, you have to check the accuracy of number and its appropriateness. Comment on tables and figures, comment on the footnotes, assess the completeness of legends, headers and X. Comment on the need for color in figures, check presentation consistency. डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा कि ये जो चेकलिस्ट है, या आप अपने थीसिस रिव्यूअर्स जो हमारे इंटरनल फैकल्टी है उनसे भी आप कहे कि जी जब भी आप मेथोडोलॉजी या चीजें अपने थीसिस में लिखते हैं तो ये चीजें सामने. So it can be a good checklist for the supervisor also to improve the kind of, क्योंकि अभी तो हम कर रहे हैं तो उसको बेहतर किया जा सकता, because this is elsewhere की. Don't suggest your own papers as a reference. ये मैंने बात की. It's very unethical कि आप अपने काम करके कि जी मेरे काम इसलिए कि आपकी citation बढ़ जाएगी. This is very unethical. मैंने कहा ना वो हमारे एक अरबी रिव्यूअर ने उसमें लिखा तो दूसरे ने उस पर बड़ा एतराज किया.
So there are some tools, for example, plagiarism detection tool at time of submission, tool based on Scopus databases, if you are a member of that, free access to Science Direct, all content published by elsewhere. If you are a reviewer, you can have some free access to Scopus and reference linking and resolution. So these are some of the benefits you can have as a. Thank you very much. This was all about the houses. You can share your experience, comment, जो भी आप. Thank you very much, sir. क्वेश्चन जरूरी नहीं है, जो कोई कमेंट अपना करना चाहता. Sir, thank you very much for such an elegant lecture. Sir, we have students of MS as well with us. Kindly put some light on the type of abstracts, as we are drafting abstracts for research article differently and for thesis differently and for a research proposal differently. Please, sir, please kindly. The abstract for a research article is normally limited by words. And as I have already discussed that we normally say that it should not be longer than 250 words. Most of the journal would say that. But in a good abstract, we would like to see 5 fundamental things. The first thing is the problem, that what problem you want to solve through this research. The second, and this is what, these are the 5 chapters of your synopsis, are the 5 chapters of your dissertation. The second is, within the problem, you try to also code the research gap or research need, and then you go for the methodology, and then you go for the results and finding, and then finally, recommendations in future work. So in a good abstract, when I'm reviewing a paper, I would like to see that the author has given these 5 fundamental things in the abstract. And now coming to the synopsis, which is normally synopsis is quite different. We have a summary of our research proposal, and this synopsis then becomes part of your abstract when you are going for the. जब आप अपना thesis submit करते हैं, तो आपका synopsis जो है वो आपका abstract बन जाता है. And that is normally a good synopsis should can be even 3 to 4 pages, 2 to 3 pages. तो जो thesis का synopsis है या thesis का abstract है, it is very extensive. Maybe it's more than 1,000 words sometime, 4 to 5 pages sometime, in which you describe all the chapters which you have written in your thesis. When you write for even if you are writing a PhD synopsis, तो जब हम इसको research से पहले करते हैं, तो ये हमारा synopsis होता है, और ये future में होता है, that we will be collecting data, we will be doing this, we will be doing blah. और जब आप इसको abstract में ले जाते हैं, अपने thesis के abstract में ले जाते हैं, then become past. कि जी the objective of this research was this, the sample was selected from this. तो basically आपका जो synopsis है, which should not be very extensive, वो आपका research thesis में आपका abstract बन जाता है या introduction बन जाता है, जो भी आप उसको कहते हैं. लेकिन जो research article का abstract है, for example, research note का कोई abstract नहीं है. You just start from the introduction and then you write the experiment and the major results and maybe 8 to 10 references. लेकिन research paper के अंदर आपका abstract tells the entire story of your research, which is very important. अब ये 250 उसमें ये लिखना is an art, but definitely you learn when you are doing this. So there is nothing like disadvantage of any research. I think जब आप limitations या delimitations लिखते हैं, उसके अंदर आप ये लिखते हैं because we believe that there cannot be a disadvantage, because if there is any disadvantage of research, ethically that is not good. तो अगर आप नेगेटिव रिजल्ट्स के हवाले से, ना नेगेटिव रिजल्ट का क्या मतलब है? सभी कोई पेपर पहले पब्लिश है, बाद में लोग उसको फॉलो कर लेना.
our results are following the results of this research. ये करके अपने काम को justify करना. आजकल नया टर्न आया सर, एक जर्नल है वो स्पेसिफिकली नेगेटिव जो रिजल्ट्स कोट करते हैं ना उसको पब्लिश करता है. मींस कि उसकी कंट्रडिक्शन में जो देखिए ये तो ये मेरे ख्याल से इसको नहीं, इस नेगेटिव का डिस्टॉर्टिव, इसको आप कहते हैं डिस्टॉर्टिव इन्फ्लुएंसेस. नाउ डिस्टॉर्टिव इन्फ्लुएंसेस आर वेरी यूनिक एंड इनोवेटिव. डिस्टॉर्टिव ये है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, मैं डिस्टॉर्टिव पर्सन. डिस्टॉर्टिव ये है कि आप सब कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता और मैं कहता हूँ हो सकता है. आप सब कहते हैं जी इट्स नॉट पॉसिबल कि हम एक 1 बिलियन, मैं कहता हूँ इस मुमकिन. तो ये डिस्टॉर्टिव थिंकिंग है. अब इसके लिए मेरे पास आर्गुमेंट्स होने चाहिए. अगर मैं कहूँ सर आपकी इस बात से मुझे इख्तिलाफ है, जबकि आपकी बात एक बड़ी एविडेंस पे बेस्ड है, और मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा रिसर्च में, तो ये इख्तिलाफ एक एविडेंस पे होना चाहिए, आर्गुमेंट्स पे होना चाहिए. इसलिए डिस्टॉर्टिव रिफ्लेक्शंस आर वेरी, इसलिए बहुत अच्छे जर्नल्स डिस्टॉर्टिव रिफ्लेक्शंस को इसलिए पब्लिश करते हैं कि द वर्ल्ड हैज गेट अ न्यू डायरेक्शंस फ्रॉम द डिस्टॉर्टिव थिंकिंग. देखिए ना, डिस्टॉर्टिव थिंकिंग आप राइट ब्रदर्स की देखे कि अपने साथ जो है वो जो पर है विंग्स बांध के वो जहाज, हाँ, तो उसने ख्वाब देखा ना कि वो परिंदा उड़ रहा है तो मैं भी उड़ूंगे. And a few years back, almost 15 years back, when I visited first time UAE in 2005 or 6, तो मैंने वहां ये उस पे देखा साहिल पे कि लोग ये ड्रोन की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. पीछे वो लगा के पानी निकल रहा है, तो they were thinking that a time would come that we will be flying as a humans will be flying. अब ड्रोन का कोई उस वक्त बात नहीं थी, लेकिन that distortive thinking created the possibility. तो दुनिया में जो रिसर्च आई है ना, आपको पता है फैक्शन से आई. जो फैक्शंस को इंसान ने अपने आप को पहले फैक्शंस में देखा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ. ख्वाब इब्न सफी के जिन लोगों ने पढ़े जासूसी कहानियां, मैं बहुत पढ़ी है, उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आज से 20, 25, 50 साल पहले नजर आएंगी जो आज हो रही है. बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल टू थिंक दैट देयर विल बी. मेरी नानी को अल्लाह बख्शे, वो टीवी देखती थी तो पर्दा करती थी. मैं उसको कहता था कि जी क्या कहते जी, ये तो गैर लोग हैं, इनको हम नजर आते हैं. तो मैं उनको कहता था कि आज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन 20 साल बाद ये आप भी उनको नजर आएंगे. तो हम सुनते थे जब हम छोटे थे कि ये ऐसे गैजेट्स आएंगे कि जिसमें लोग एक दूसरे को देखेंगे. इट वाज, हम तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जमाने में 70s में टीवी आया ना. तो हमने छोटे छोटे थे, पहला ड्रामा ब्लैक एंड व्हाइट में, ये फिल्में ड्रामे इतवार के दिन, जो मेरी एज के लोग हैं. लेकिन उस वक्त ये लोग कहते थे कि जी ये एक वक्त आएगा कि हमें, अब मैं कहता हूँ ये देखिए आप स्काइप है और जूम है और फला लाइफ इज बिकम. तो ये डिस्टार्टिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दिस. अब डिस्टार्टिव थिंकिंग की जो डॉक्टर साहब ने बात की, उसके लिए आर्गुमेंट्स की जरूरत. इफ यू जस्ट ऑब्जेक्ट मी या मैं आपको, हम तो दिस इज जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. इसलिए ये इसलिए खासकर आईटी में डिस्टार्टिव थिंकिंग इसलिए ज्यादा पब्लिश हो रहा है कि आईटी के अंदर बहुत चीजें आ रही. मेटावर्स इज अ फिजिकल होलोग्राम्स जो है इस वक्त जो आ रहा है, कि हमने जाके दुबई में आइंस्टाइन से भी बात की, हमने आइंस्टाइन से भी बात की, हमने स्टीव जॉब्स से भी बात की. ही वाज देयर इन द होलोग्राम एंड ही वाज आंसरिंग आवर क्वेश्चंस. नाउ दिस इज द फ्यूचर ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इन द स्कूल टीचिंग, कि आपके एक टीचर है, इसके पास 1 बिलियन आंसर्स डेटाबेस में पड़े हैं. तो डेटाबेस नेटवर्किंग मेटावर्स, दैट इज अ न्यू वर्ड कमिंग अप. There's a new technology, new. Any other argument, question? जी, Mehran. As a reviewer, आपकी क्या गाइडलाइन है, हम कौन सा पेपर एक्सेप्ट करना चाहिए? काफी प्रॉब्लम. मेरे ख्याल में देखें, मेरे पास इस वक्त 3-4 किस्म के पेपर आते हैं जो मैं रिव्यू करता हूँ. आई रिव्यू ऑलमोस्ट 1 पेपर एवरी मंथ, नॉट एवरी वीक, 1. कभी भी मेरे पास 2 पेपर पड़े. एक तो मेरे कोर इंजीनियरिंग के पेपर है जो मेरे एरिया कंप्लीट के हैं,
दूसरा मैं सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स, इन चीजों को रिव्यू करता हूँ। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये 3-4 एरिया। किसी भी पेपर को रिव्यू करने के लिए जरूरी है कि उस नॉलेज में आपकी एक्सपर्टीज, और जरूरी नहीं है कि वो आपका कोर एरिया है। अब लीडरशिप पे आपके पास पेपर आता है और आप उसको रिव्यू करते हैं, तो अगर आपकी लीडरशिप का पता नहीं है, थ्योरीज का पता नहीं है, लीडरशिप मॉडल्स का पता नहीं है, तो आपको हर चीज अच्छी नजर आएगी। तो वर्क इन दैट इज इंपॉर्टेंट दैट यूर and number 3, your review experience. ये 3 चीजें। उसके लिए अच्छी बात यह है कि अगर आप एक पेपर रिव्यू करते हैं तो उस रिव्यू को शेयर करें अपने सीनियर कोलीग के साथ कि जी ये मैंने एक रिव्यू किया है, डू यू थिंक दैट दिस रिव्यू इज सफिशिएंट, और वो आपको शायद 2-4 चीजें और बताए। हो सकता है कि कुछ काम उसमें कंप्यूटर का हो, उसमें कोई मॉडलिंग उसने की, वो आप नहीं कर सकते हो, तो आप डॉक्टर नवाब को कहे कि यार ये मॉडल जरा आप देख ले, ठीक है। तो इसमें कोई आप इनपुट्स दे सकते हैं। तो क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी चीजें भी हो रही है, उसमें मॉडलिंग की चीजें हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको आता हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको आता हो तो आप रिव्यूअर हो सकते हैं। यू कैन गेट help of your other colleagues to teach you about the models, to teach you about सर कोई ऐसा है कोई सिस्टम की वो रिव्यूअर्स को सिलेक्ट करे? जैसे एक मैंने लास्ट टाइम एक रिव्यू किया था, लेकिन उन्होंने मुझे मेल किया था, वी वुड लाइक टू ask you to review the manuscript जो because you are the qualified. अब ये जर्नल ऑफ इंटेलिजेंस वाले सिस्टम है, हालांकि मैंने इनको वो भी नहीं दिया था कि मैं आपका रिव्यूअर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये कॉन्टेक्ट किस बेस पे करते हैं? आप नहीं, वो देखे मैं आपको बड़ा आपका सिंपल, हमें रोजाना तकरीबन कोई ना कोई ऐसा ईमेल आता है। बेसिकली जो आपके 5-6 कीवर्ड्स होते हैं, दैट कीवर्ड आइडेंटिफाई योर रिसर्च इन। वो कीवर्ड से डेटाबेसेस में जाते हैं, डेटाबेसेस से मैंने अर्ज किया ना कि इस वक्त रिव्यूअर्स को उनको बहुत सख्त जरूरत है। वॉलंटियर काम है, लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग टाइम नहीं देते, पब्लिशर बेचारे जाहिर है उनकी बिजनेस भी है, वो चाहते हैं कि उनका वॉल्यूम जल्दी आ जाए, अगला वॉल्यूम जल्दी आ जाए, आप रिव्यूअर नहीं होंगे तो इसलिए वो फिर आपको इन दिस वॉलंटरी प्रोसेस, इसमें कोई पैसा तो कोई देता नहीं है, तो बट आई नॉर्मली प्रेफर रिव्यू बिकॉज आई लर्न फ्रॉम रिव्यूज। मैं इसलिए रिव्यू करता हूं कि मैं कुछ ना कुछ उस पेपर से सीख जाता हूं, एंड सम टाइम आई डेवलप माय ओन डायरेक्शन ऑफ न्यू रिसर्च कि जी एक एरिया है जिसमें मैं एक स्टूडेंट को उठा के हम जीबी में भी ये काम कर सकते हैं। So that's why review would enrich and improve your knowledge about the different things. ये पब्लिश पेपर्स जो होते हैं सर, इनके पास the documents होते हैं। वो आ गए, आप लेट आ गए, आप लेट आ गए। कितनी होती है, रिजेक्शन हो, उसका प्रोसीजर क्या होता है? पास दफा ये वो लेट आने के ये नुकसानात इसका नाम से ये भी होता है सर, वो जो है टाइपो की वजह से बाज़ लोग ऐसे होते हैं, अगर उसमें टाइपो होने लगी देखा ना, फिर वो नहीं करते, फिर उसको एक लंबा। देखिए मैं आपको बताऊं, एक जर्नल की पॉलिसी, अगर एडिटोरियल ऑफिस ने उसको रिजेक्ट किया बेस्ड ऑन, तो फिर वो रिव्यू में नहीं जाता। तो डेस्क रिव्यू पहले होता है, और डेस्क रिव्यू में अगर, और डेस्क रिव्यू वाले उसके टेम्पलेट्स को देखते हैं, उसकी लैंग्वेज को देखते हैं, दे डोंट नो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बट दे नो दैट व्हाट इज गुड इंग्लिश। तो अगर उनको ये नजर आ जाए कि आपकी साइटेशंस ठीक नहीं है, आपका लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपने जर्नल, दे विल रिटर्न इट कि ये इंप्रूवमेंट आप कर लें, या वो कहेंगे कि इट इज नॉट। वो तो है ही ना। मैं सर ये कह रहा हूँ, जी साहब, सवाल ये होता है तो बाज़ दफा जो है पब्लिश कमेंट कि करते उसमें अगर कोई पब्लिश हो गया सर, सारे प्रोसेस से वो चला जाता पब्लिश है। करते हैं। तो आपके वो आपके उसका नहीं, एक होता है डिस्कशंस आप कहने से पहले कि मेरे काम पे नॉर्मली गुड पेपर वुड हैव अ सेक्शन ऑफ डिस्कशंस एट द एंड ऑफ द पेपर, कि जी हमारे पिछले जर्नल में ये जो 10 पेपर छपे थे इस पे डिस्कशन, तो मुजीब साहब ने कहा कि जी इसमें ये चीजें भी हो सकती, तो दैट बिकम्स अ नॉलेज, बट दैट नॉर्मली दैट इज नॉट साइटेड। इसी तरह
कोई रिसर्च तो वो हमने किया है। टाइपोस की गलती या ये भी उसमें हो सकता है डिस्कशन की, जी फला पेपर बड़ा अच्छा था लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी गलतियां थी जो सर ठीक बाद थी। लोग अपना पेपर बना के पब्लिश करते हैं। अजीब साहब का सवाल ये है कि मेरा जब ऐसे पब्लिश कर लेते हम्म। तो जो भी लोग कोई मॉडल में publish छोटी करते सी हैं, गलती या कहीं से गलती निकाल के ना उसको कमेंट करके पब्लिश नहीं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हो जाता है ना, तो एक प्रोसेस ये है ना कि आप जवाब नहीं दे इसको करेक्ट, तो उसका वाला वो कमेंट जाएगा, अदरवाइज वो पब्लिश होगा ये बस। आई डोंट हैव सच एक्सपीरियंस। मैं अपनी ये बात ये है आपको वो अपना पेपर लिखने से पहले आपको कांटेक्ट करता है, आपका पेपर मैंने पढ़ा, ये गलतियां हैं, आप दोबारा चेक करें। मुझे देखिए ये आपके एथिक्स पे मुझे एक इंडियन ऑथर ने पिछले दिनों लेटर लिखा कि जी मैंने आपका पेपर देखा और इतना अच्छा नहीं था फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया। तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा इसका मतलब कि ये मुझसे को पैसे लेना चाहते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करना था तो न करे। तो लोग लिखते हैं ना, पीपल, आप क्या करें। तो उनका भी हमारी तरह शायद वो किसी से पैसे भी मांगते हो कि मुझे $200 ट्रांसफर करे तो आपके पेपर में एक्सेप्ट करें। तो ये तो कैलकुलेशंस वगैरह में गलतियां होती हैं सर, वो पकड़ के राग साहब, Thank you. But जिस तेजी से जीत रहे वो है रिसर्च में पाकिस्तान में, तो बड़े तेजी से जीत रहे हैं। तो सारा बेसिक पॉइंट में आना और रिसर्च के बेसिक प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट आज का जो बेसिक रिसर्च में हम देखते हैं कि रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू है उसको अक्सर हम स्किप कर जाते हैं। इवन उसमें भी आप देखें तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी करते हैं वो लिटरेचर रिव्यू के साथ। हालांकि लिटरेचर रिव्यू भी पता चलता है कि आप उस टॉपिक के ऊपर कितनी कमांड, अगर किसी बच्चे को मेरा देखना है तो इकोनॉमिक्स में उसकी क्या कमांड कितनी है, तो वो ना उनके रिजल्ट से पता लगे ना उनकी मेथोडोलॉजी से पता लगे। वो लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने और क्रिटिकली या पॉजिटिवली एक्सप्लेन करने की स्टेप, लेकिन वहां से सब एक लिटरेचर जो बंदे को कितनी मार। तो खास तौर पर जो हम एमएस पीएचडी की हमने वर्कशॉप करते हैं तो यहाँ से भी मैंने देखा बाकी अक्सर हम लिटरेचर रिव्यू को करके स्किप करें स्टूडेंट, और वही स्टूडेंट जब एमएस करके पीएचडी करके रिसर्च करते तो वहां भी वो लिटरेचर को इतना वैल्यू नहीं करते। तो उस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी वो कमांड होती है, हम अच्छे रिसर्चर अच्छे जर्नल जो होते हैं जिस तरह इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू, तो सबसे ज्यादा कमेंट जो है वो लिटरेचर रिव्यू है। तो वो ही पेपर एक्सेप्ट होते हैं जिनका लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बड़ा असर है। डॉक्टर साहब असल में आपकी बात बड़ी वजह है। मेरे ख्याल में तो किसी भी थीसिस को जब आप देखते हैं तो द मेजर पार्ट इज योर लिटरेचर रिव्यू, and the good literature review or introduction of the paper should lead you to the gap of knowledge and the justification of your research to fill part of that gap. जो हायरार्की है ना हमारे यहाँ असल में जो इस वक्त जर्नल्स की थोड़ी सी इन चीजों पे फोकस नहीं है, ज्यादातर डेटा पे है। अगर आपके पास एक रिच डेटा है ना, चाहे उसकी जरूरत थी या नहीं थी, वो उसको इसलिए पब्लिश करते हैं कि उसकी साइटेशन अच्छी होती है। अभी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोर्स पर एक हमने डॉक्टर अतीक को जो लिया है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग में भी उसका स्टूडेंट उस कोर्स में बन गए हो। जो क्वांटिटेटिव टूल्स है उसमें कुछ टूल्स ऐसे आ गए विच कैन हेल्प यू टू गो फॉर एग्जांपल एनवीयू है which can help you in the literature review also. There are many other tools, वो अभी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। मेरा ये ख्याल है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इन टूल्स की तरफ लाएं। मिसाल के तौर पे आप ऑब्जेक्टिव्स को जब डिफाइन करेंगे तो कौन सा टूल्स आपके सामने होने चाहिए, कौन सा आपको हेल्प कर सकता है
आप एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करेंगे तो, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बेहतर हो गई है, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी अपनी कैपेसिटी. I volunteer. By default, I became student in that class, and I took permission from Dr. Atik, who is my friend, a student and teacher also. और मैंने उनको कहा कि हम आपसे सीखना चाहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी, एनवीयू में भी, ये सारी चीजें. तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि लिटरेचर रिव्यू पे एम्फेसिस बहुत होना चाहिए, लेकिन लिटरेचर रिव्यू से तो ही पता चलेगा कि रिसर्च जस्टिफिकेशन है भी कि नहीं. और यही मैं आपको कहता हूं कि हमारे यहाँ मैं देख रहा हूं कि आप एक लोकेशन को चेंज करके एक रिसर्च बना रहे हैं. आप उसी स्टडी को बीएड स्टूडेंट्स इन फॉर एग्जांपल दन्योर डिस्ट्रिक्ट एंड बीएड स्टूडेंट्स इन फला डिस्ट्रिक्ट, और वही डेटा मोर और लेस, वही ग्राफ्स. दिस इज नॉट अ लिटरेचर. You are just changing the population or changing the sample, and you say that is a research. This is not a research. What on the top of that would you like to bring is a value addition. कि मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट ने एटीट्यूडनल स्केल को रिव्यू किया है, तो उसके बाद आप क्या ला सकते हैं, एंड दैट वुड बी कमिंग फ्रॉम योर लिटरेचर रिव्यू. तो एक अच्छा, इसलिए मैंने कहा ना कि जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, जो अच्छे रिसर्चर्स हैं, दे ऑथर 3 to 4 पेपर्स फ्रॉम देयर रिव्यूज. अभी मैंने एक रिव्यू पेपर एल्सवेयर एक जर्नल में लिखा, व्हिच इज पार्ट ऑफ माय रिसर्च रिव्यू. इसलिए कि आप 200 पेपर पढ़ते तो उससे तो आप जबरदस्त 3-4 रिव्यू पेपर्स. लेकिन हमारे यहाँ, मैं आपसे ज्यादा बिल्कुल एग्री करता हूँ, हमारा फोकस मेथोडोलॉजी पे है, डेटा पे है, रिसर्च जस्टिफिकेशन पे नहीं है कि क्या इस रिसर्च की जरूरत भी है कि नहीं. मेनी टाइम वी डू दिस. वो जी सी बख्तार का फला जगह में सी बख्तार तो वही है ना, उसमें ऑन द टॉप ऑफ दैट कोई नई चीज आप डालें ना, फिर एक रिसर्च वो बन जाएगी. और ये जो रिपीटिशन है, या जो ये रिडंडेंसी ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स है, दैट इज नॉट क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन सोसाइटी. डॉक्टर अकबर. सर मेरे क्वेश्चन सर ये अगर मैं रिसर्च एथिक्स है वो मेरे को चाहिए 100%. सर. एथिक्स में लाइक एक पेपर पब्लिश हुआ था सर कुछ साल पहले बहुत ही जगह यूनिवर्सिटी से. तो जो सब्जेक्ट था उसके नेट से एक टीचर था एक उसको रिपोर्ट, और उससे उसके ऊपर से जो रेड ब्लड सेल्स उनका पिक्चर केमल था. केमल के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं सर वो डिस्क शेप होते हैं. इसके पिक्चर में ओवल शेप. उसने कहा कि ये पिक्चर जो दिया था उसके नीचे तो बड़े रिसर्चर्स थे सर, उनके कमेंट्स से निकला. उसने नीचे लिखा था कि यार ये जो रिव्यूअर ने ये पेपर रिव्यू किया तो क्या इससे होना चाहिए, उसने ये पेपर को रिव्यू कैसे किया और क्यों इसके जो है इस पिक्चर को बनाना इस तरीके से नहीं किया और टीचर के बाद विश्व ऐसे का जानना था. देखिए डॉक्टर साहब, दो चीजें है ना. एक बंदे को मेरा पेपर गया, उसने मुझे ईमेल किया कि इस पेपर में मेरा नाम डाल दो, तो मैं इसको आके एक्सेप्ट करता हूँ. ये तो ठीक है ना जी, या अगले पेपर में मेरा नाम डाल. तो मैंने कहा कि तो मैं 100 साल में भी नहीं करूंगा. एक आदमी ने एक गोस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक गोस्ट जर्नल उन्होंने चलाया, 10 पेपर लिखे, उन्होंने अपनी प्रमोशन कराई, उसके बाद जर्नल खत्म हो गया. मैंने उसको अप्रोच किया कि जी मुझे ये डेटा चाहिए, आपका रिफ्लेक्शन, और एक डेटा कहीं पे नहीं था. अब एक प्रोफेसर था और एक एसोसिएट प्रोफेसर खातून थी. उन्होंने जर्नल ऑफ अर्थ साइंस बुलेटिन या कुछ तरह का नाम था, उसको मैंने अप्रोच किया कि ये डेटा मुझे चाहिए, क्योंकि रिव्यूअर ने कहा कि इस डेटा पे आप जरा देख ले, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है नेट में, तो इसका देख ले. उसने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि डॉक्टर साहब आप इसमें मुझे आथर डालेंगे तो मैं आपको. एक है लेक ऑफ नॉलेज. देखिए लेक ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी कि एक आदमी को ये पता नहीं था कि ये ओवल शेप सेल जो है ये कैमल के थे, और उसको वो नहीं था, और उससे गलती हो गई, तो उस गलती की वजह से अगर वो वर्क पब्लिश हो गया और वो एडमिट करता है कि ये मेरी गलती है, तो खैर इसमें तो फिर ह्यूमन एरर इज ऑलवेज. अच्छा, उसने ये कहा था कि ये मेरा काम है. But again, I tell you that the reviewer is not responsible.
डिसऑनेस्टी में आता है ये तो आथर की डिसऑनेस्टी है ना. A reviewer is not responsible to provide the citation of everything. Reviewer believes that whatever you have given is genuine, original. आप एक सर्टिफिकेट देते हैं ना. उन्होंने ये कहा था कि भाई इसने तो एक काम प्रोग्राइज किया है और उसको अपना काम समझ के पब्लिश किया है, ऐसे फिगर दिया, ऐसा नहीं है सर, फिगर आपने फिगर बनाया सर को कहता है. और उस पर उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर ये रिव्यू के नजर से गुजरा तो रिव्यूअर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर वो तो यही तो हम गुजारिश कर रहे हैं कि उस रिव्यूअर को नहीं रिव्यू करना चाहिए. दिस इज द एथिक्स. ये एथिक्स तो हो गया ना. आप एक काम का एक्सपर्ट नहीं है तो वो जो 5-6 क्वेश्चन हमने रखे आपके सामने वो यही थे ना कि आप उस फील्ड में जाते हैं. आपकी अगर जी जी बहुत है और बेहतरी आ रही है. मैं 2 साल से ही विषय पढ़ रहा हूँ. मेरे साथ नहीं कर ये बड़े नहीं, कुछ जर्नल्स में आप देखें तो एक 10 बंदों के अलावा किसी और का पेपर ही नहीं आता. तो बारह से ये बड़े इश्यूज हैं. द सेम टाइम्स में प्लस हम याद रखते हैं कि स्पेशली यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन के साथ साथ स्कॉलरी डिस्कशन भी हमें इंग्लिश है ताकि माइंड को फ्रेश करें या एट द सेम टाइम सर जो आर्टिकल के जो चैलेंजेस है ना क्या लिखते वक्त क्या रिव्यू कर जो मैं फेस कर रहा हूँ सर वो टारगेट और कंटेंट तो मेरे लिए बहुत रेलेवेंट होता है. मेंटल हेल्थ यूजुअली मेरा किया करे साइकोलॉजी को बड़ा थॉट्स जब मैं इसके एनालिसिस के साइड पे जाता हूँ सर स्टैटिस्टिकल टूल्स इतने अवेलेबल हैं हर पेपर में एक नया टूल मैं देखता हूँ, एक टेक्निक देखता हूँ, चाहे वो रिग्रेशन हो, इंट्रेक्शन हो, मेडिएशन हो, मार्केशन हो. बात होता है मुझे वो स्टैटिस्टिकल टूल का ही नहीं पता होता है, मुझे टर्म ही आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट. डॉक्टर साहब मैं बीच में आकर रिग्रेट कर. अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि अभी इवन हमारी इंजीनियरिंग जर्नल्स में वो कहते हैं जी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाल दें, एटलीस्ट कन्वर्शन एनालिसिस ये वो. मैंने आपकी ये जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट को लोग चाहते हैं ना हमें प्रमोट करें, लेकिन काम मैंने उनको कहा कि आप एक रिसर्च एंड इवैल्यूएशन सेंटर बनाएं जिसका काम हो कि डेटाबेसेस जो हमारे उसको रिसर्च करे, जो हमारा प्रोजेक्शन है, जो हमारा स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी है, प्लस हमें ट्रेन करे मॉडर्न टूल्स पे. देखिए ना, अब बात हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग की, हम बात कर रहे हैं मॉस की, हम बात स्पीसेस का तो जमाना ही खत्म हो गया. अब अगर आप स्पीसेस पे आज करेंगे तो इसमें ये नहीं है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर महफूज से मैंने पूछा तो उनका स्ट्रक्चर मॉडलिंग पे मेरा ख्याल है कि हम एक ग्रुप बनाए, ये आपने उधर भी बनाया था हमारे साथ. आप जानते होंगे डॉक्टर चिश्ती साहब, अनवार चिश्ती मैनेजमेंट का प्रोफेसर था. ही इज वेरी गुड इन द टूल्स. अभी तो इज वेरी ओल्ड. तो अनवार चिश्ती साहब को हमने, और वो यही कहता था कि मैं कल मर जाऊंगा और ये चीजें मेरे साथ दफन हो जाएगी, मुझे एक वॉलंटियर ग्रुप चाहिए जिनको मैं इन टूल्स पे, ई व्यूज पे, ये सारी चीजों पे मैं, बिकॉज ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड मैनेजमेंट साइंटिस्ट. और उन्होंने हमें बड़ा उधर ट्रेन भी किया. मेरा ख्याल है कि आप आपस में एक ग्रुप आइडेंटिफाई करें, चाहे उसमें असद, चाहे आपका डॉक्टर असदुल्ला जो है, चाहे जो हमें इन मॉडर्न टूल पे, ये जो डॉक्टर मैं आपके लिए भी प्लान कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि हम डॉक्टर अतीक को यहाँ बुलाए एक हफ्ते के लिए. वेरी एक्सलेंट टूल्स. ये सारे जो आपके पेपर के जितने पार्ट्स हैं ना, उस सारे के टूल्स उसको पता है कि इन व्यू पे क्या हो सकता है, ला पे क्या हो सकता है. इसके लिए हम एक ग्रुप बनाए जो एक टूल पे एक्सपर्ट हो. आई नो द कैपेसिटी ऑफ डॉक्टर असदुल्ला, आई नो द कैपेसिटी ऑफ डॉक्टर महफूज, और भी लोग होंगे, और उनको हम जो है ये टास्क दे के जी ये जो मॉडर्न टूल्स है इस पे हमें, अब देखे ना पाइथन आ गया है, आर स्क्वेयर आ गया है, आर आ गया है. अब उस पे अगर आप रिसर्च डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे, पब्लिश ही नहीं होगा. तो
ہمارے پاس انڈیویجول کیپیسٹی تو کئی ہے. میرے خیال میں اس کو اگر ڈاکٹر اسد صاحب لیڈ کرے, آپ ایک نوٹیفیکیشن کریں کہ جن لوگوں کو ماڈرن انالیٹیکل ٹولز پہ دسترس ہے وہ کائنڈلی ہمیں بتا دے, تاکہ ان کے لیے ہم ایک 1 ویک ورکشاپ تمام فیکلٹی کو اس پہ بٹائے, 2 گھنٹے ڈیلی, 3 گھنٹے لیٹ ٹائم میں بے شک ہو, اور اس میں ہم آپس میں بیٹھ کے یہ ٹول سیکھیں. یو آر ویری رائٹ, میرے اپنے پیپر میں یہ پرابلم آ ابھی میرے پاس ایک ڈیٹ ہے, مجھے نیورل نیٹ ورک ماڈلنگ نہیں آتی. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ کوئی میرے ساتھ ہو تو ہم پیپر, بیکاز آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی ہیو, میرے پاس ادھر ایک بندہ تھا, ہم نے وہ ڈیٹا لٹریچر ریویو سے ڈیٹا لیا, اس پہ ٹرینرز ڈیولپ کیے اور اس کو پبلش کیا. نیورل ورڈ ایک وہ ہے اس پر پبلش امپیکٹ جرنل. تو اس کے لیے ظاہر ہے وی نیڈ ٹو لرن دیز ٹولس. آپ کا دیکھیں نا سگنیفیکینس, آپ نے ویلیو وغیرہ نکالنا ہوتا ہے, آپ نے ابھی تو ٹیسٹ بہت آگے, کران بوشن ہے, آپ کا کوشچنر کے ٹیسٹ, اس کی ریلیبلٹی, اس کی ویلیڈیٹی کے 2-3 ٹیسٹ ہے, وہ اگر ہمیں نہیں آتے تو آج کل کے اچھے جرنل میں آپ پبلش نہیں کر سکتے, صرف اس لیے کہ 10 بندوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور 12 بندوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ صرف ڈسکرپٹیو, تو آپ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک پہ اب آپ اپنا پبلش, آج سے 10 سال پہلے آسان تھا, پیپل وڈ لو ٹو سی اے بگ نمبر آف ڈیٹا. اب وہ کہتے ہیں جی انفرنشل اسٹیٹسٹک اگر آپ کے پاس نہیں ہے which can give an inference, تو اس پہ ہم انشاءاللہ ایک ورکشاپ, ایک 1 ویک ورکشاپ کرتے ہیں, اور اس پہ ہم بلکہ ہم نے تو یہ بھی, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو ہم پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی ٹرین کریں, کہ اگر آپ اپنا ریسرچ پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں, مائل سٹون ڈیٹا کس طرح نکالنا ہے, بار چارٹس کس طرح بنانا ہے, ایکٹیویٹی کو کس طرح, تو یہ جو عتیق صاحب کو ہم نے ٹاسک دیا ہے کہ وہ ہمیں کم از کم ایم ایس پروجیکٹ پہ ٹرین کرے, تاکہ جو چھوٹا بڑا پروجیکٹ ہم کریں ہمارے پاس ایک پلاننگ ہو, ہمارے پاس مانیٹرنگ میکینک ہو, کیا ٹارگیٹس ہے, کس طرح اچیو کرنے ہیں, کس طرح ریویوز کرنے ہیں اپنے پروجیکٹس کے. تو ان کو ہم نے انگیج کیا. وی ہیڈ 1 کلاس لاسٹ سنڈے, اور ان کو کسی وقت ہم بلا بھی لیں گے, لیکن جو ہمارے انٹرنل لوگ ہیں جن کے آلریڈی دے آر ریسورسفل, آئی تھنک وی ہیو کپل آف پیپل ہیئر who can be encouraged and motivated. چلے ان کو ہم تھوڑا سا ایک آلریڈی ابھی دے دیں گے, چلے 10-15 ہزار روپے اس کا دے دیں گے کہ جی آپ کرے. تو اس سے جو ہے ایک دیکھیں نا ہاریزنٹل, اگر ایک آدمی ادھر ہے اور میں ادھر ہوں, اور یہ اوپر جا رہا ہے اور میں ادھر ہوں, تو یونیورسٹی وڈ ناٹ, جب تک ہم ہاریزنٹل گروتھ نہ کرے کہ جی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کیپیسٹی بھی بڑھاؤ. تو وی نیڈ سم پیپل ٹو بی آئیکنز ان دی یونیورسٹی, کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. لیکن اس کی مثال ایسی ہے نا کہ ایک ایسی فیملی ہو جس میں ایک آدمی انجینئر ہو, باقی تو وہ فیملی کبھی بھی, اگر اس میں باقی لوگ بھی پڑھے لکھے آہستہ آہستہ ہوتے جائے تو وہ ایک فیملی. سو وی آر لائک فیملی, کہ جب تک ہر آدمی کی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوگی, اینڈ دیٹس وائی مائی مور کنسرن از اباؤٹ دی نان اکیڈمیا. بیچاروں کی کوئی کسی نے ٹریننگ ہی نہیں دی, وہ لیٹر کوئی نہیں لکھ سکتا. ایک لیٹر میرے پاس 1 پیج کا لاتے اس میں 12 غلطیاں ہوتی. اب ٹھیک ہے وہ 20 گریڈوں میں تو ہے, ہم ان کو گریڈوں سے تو نہیں نکال سکتے, لیکن ان کی کیپیسٹی کون ڈیولپ کرے گا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر وہ کل کسی میٹنگ میں جاتا ہے اور ہمیں ریفلیکٹ وہاں کرتا ہے اور وہاں بات کرتا ہے, تو I get a very negative feedback کہ جو آپ کا بندہ آیا تھا اس نے تو بات ہی نہیں کر سکا, he could not. تو ہمیں ایون اپنے جو ایک یہ جو G2 کے لوگ ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے, ان کو بھی بتانا چاہیے کہ جی کب اٹھانے کا یہ طریقہ ہے, صفائی کا یہ طریقہ ہے, تب جا کے آپ کی ہاریزنٹل گروتھ ہوگی. ادروائز کیا ہوگا, میجورٹی آر ناٹ فیکلٹی. ہم سب لوگ تو چلے کہیں نہ کہیں سے پڑھ لیتے ہیں, ہماری ٹریک میں یہ چیزیں ہے کہ آپ نے کرنا ہے, ریسرچ بھی کرنا ہے, لیکن بہت سارے لوگ 16 گریڈ سے 20 گریڈ پہ پہنچ گئے, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی کیپیسٹی, اینڈ دس از مائی بگ کنسرن. میں ڈاکٹر صاحب سے روزانہ کہتا ہوں کہ نان فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ پہ زیادہ, ایک چوکیدار ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کرٹسی کیا ہے, ایک سیکیورٹی کا بندہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی کیا ہے, کس طرح آپ نے سیکیورٹی. تو یہ جب تک ہم ان کے لیے بھی, میں ابھی ٹریننگز لا رہا ہوں جینیٹوریل سے لے کے, میں کچھ کمپنیز سے بات کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ ایک سویپر کو بھی پتا ہو کہ اس نے کیا کس طرح کرنا ہے. They go and they many times don't clean the things.
वहां पे कोई रोस्टर लिखा हो कि जी इस चीज को फला आदमी ने फला वक्त को, आप जो किसी भी अच्छे होटल में जाए वहां पे दरवाजे के पीछे एक रोस्टम होते हैं, फला स्वीपर इस टाइम को आया था, इसने साफ किया, नेक्स्ट जो है वो 10 बजे आएगा, अगला 12 बजे आएगा. वी शुड हैव अ कल्चर इन विच पीपल हैव द कैपेसिटी. हमें किसी के आगे आने पे कोई एतराज नहीं है, खुदा करे सब लोग आगे आ जाए, लेकिन अगर कैपेसिटी के बगैर लोग आगे आएंगे, द यूनिवर्सिटी विल नॉट ग्रो. लेट मी टेल यू, इट विल बिकम अ वेस्ट इन अ बर्डन ऑन यू. हम तो चले जाएंगे, आप कहेंगे कि जी, और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि यूनिवर्सिटी में फैकल्टी तो बड़ी अच्छी होती है, नॉन फैकल्टी की कैपेसिटी उनसे पूछे तो कहते जी हमें कभी किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी. अभी मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि अब मेरे साथ आप एक कैलेंडर डेवलप करें जिसमें हर लेवल के लोगों के लिए 1 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 16 तक, 16 से admin officers, they can't write a single paragraph and you call them admin officer. That's a, डिस्कोर्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया. इसमें सब बातें बड़ी इम्पोर्टेंट तरह से बात. एक तो आपकी ये जो बात आप पहले जो बोले थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस तेजी से पूरे दुनिया को कंट्रोल दिला रही है, तो हर महीने के बाद सर हमें एक नया टूल नजर आता है. आप इस्लामाबाद में या मुल्क से बाहर जो हमारे शरीर से जो आता है, हम उनसे बात करते हैं, मंडे की बात करते हैं, नोट की बात करते हैं, बटन की बात करते हैं, वो कहते हैं वो हंसते हैं. पता नहीं ये नया टूल आया है. इसमें सर हमें एक सिस्टम यूनिवर्सिटी में ऐसा होना चाहिए कि हर 6 महीने के बाद जो नया लेटेस्ट सॉफ्टवेयर. डॉक्टर साहब ये जो मैं आप थोड़ा इसमें हेल्प करें, हम एक R&D सेल बनाए. आपके पास 2 स्टैटिस्टिक के, एक को हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया, दूसरे को मैंने कहा रिजल्ट दो तुझे भी बना लेंगे, हमें तुम्हारे बनाने पे व्हाई शुड आई कीप यू व्हेन यू डोंट गिव. मतलब मैं 2 स्टैटिस्टिकल से क्या करूं. मैंने उनको कहा आप एक R&D टीम है, R&D सेल बनाए, और ये टूल हर 6 महीने बाद एक नए टूल पहले आप खुद सीखे. जब आपके रिजल्ट्स आएंगे उस R&D सेल में, रिसर्च एंड इवैल्यूएशन सेल में हमारा डेटा कहीं नहीं है, हमारा एनालिसिस नहीं है, हमारे प्रोजेक्शंस नहीं है. इवन एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखते हैं इतने जबरदस्त किस्म के टूल्स हैं, हम लिखते हुए रिपोर्ट्स बनाते हुए कितना टाइम लेते हैं कमेटियां बनाने, वो एक क्लिक पे बनती है. जब आप उस सॉफ्टवेयर पे मसलन आप नूडल्स पे काम करते हैं और सारे डेटा को डालते हैं, एक क्लिक पे ग्राफिकल बायोग्राफ और क्या क्या किस यही सर, सिस्टमेटिक रिजल्ट आपके सामने आता है. देखिए ये नॉर्मली यहाँ पे तो यहाँ पे तो ये है कि हम ईमेल भेजते हैं, वो कहते नहीं आप उसको प्रिंट करके साइन करके स्टैम्प लगा के भेजिए थे जब मानेंगे, उस चीज का तो नहीं मानते सब. नहीं डॉक्टर साहब, इसकी वजह यह है ना कि इसको हमने फॉर्मलाइज नहीं किया. दूसरा, आज हमने, डॉक्टर साहब ने कल मुझे कहा, फिर मैंने कहा एक प्रॉपर स्टूडिफिकेशन करें. मेरे ख्याल में हम डॉक्टर असद साहब को ये टास्क देते हैं कि वो, बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर द स्टैटिस्टिक्स आल्सो, कि ये उधर एक R&D सेल बनाए, रिसर्च एंड इनोवेशन सेल बनाए. उसको हम 2 टास्क दें डॉक्टर साहब. एक तो हमारा डेटा एनालिसिस करे, डेटा मेंटेनेंस करे. इस वक्त आप, अगर आप इस वक्त मुझसे पूछे ना कि यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट है 5 फिगर्स, एक बंदा तो कहते हैं 7,200 है, दूसरा आते नहीं सर इसमें तो 6,900 हो गए, तीसरा आते सर ये तो 6,900 भी नहीं है. तो उधर से TC वाले कहते हैं कि जी आप अपने स्टूडेंट भी नहीं काउंट कर सकते. वी नीड अ रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर. ये हर यूनिवर्सिटी में होता है, जो डेटाबेस को मेंटेन करता है, स्टूडेंट डेटाबेस, फैकल्टी डेटाबेस, आपकी जो डाइवर्सिटी. दूसरा, आपको मॉडर्न टूल पे वर्कशॉप्स देने चाहिए. ये टास्क मेरे ख्याल में आज हम अप्रूव करते हैं, दैट देयर विल बी रिसर्च. देखिए उसमें उनका भी फायदा है. 2 पोजीशनें अगले हम ले आएंगे. मैंने उनको कहा कि आप रिजल्ट दे देना, तो मैं हाउ कैन आई जस्टिफाई कि 2 कोर्सेज के लिए 3 बंदे अगर आप है तो आप दे दे, तो हम उस सेल के लिए आगे जाके 2 पोजीशनें भी कहीं से निकाल लेंगे. लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं आया हूं तो आप मुझे आप ऊपर ले जाए इसलिए कि इस्माइल साहब ऊपर गए हैं और फला ऊपर गए हैं. यू हैव टू डिलीवर इन सिस्टम. तो इसलिए आप सर इसका वो बनाए, QR बनाए, और उसका ये हो कि जितना भी यूनिवर्सिटी रिलेटेड डेटा है वो मेंटेन, जिधर से भी है वो, एम्प्लॉय डेटा, ट्रेनिंग्स डेटा, ये सारी चीजें जब हमें भी
बेगम साहब को पता है जब हमने ये बना रहे थे हमारे पास कोई रिलायबल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, कोई रिलायबल स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिस पे हम आर्गुमेंट्स क्रिएट करें, बिकॉज वी डोंट हैव अ सेक्शन व्हिच कैन सो कॉल। हमने डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स को कहा है, लेकिन वो आपको पता है बेचारे क्या, सम पीपल इवन कैन नॉट यूज द कंप्यूटर्स, इट्स सो अनफॉर्चुनेट इन दिस एज। तो इसलिए हम एक रिसर्च इनोवेशन सेंटर करते हैं जिसके अंदर इनके 3-4 यूनिवर्सिटी के जितना भी डेटाबेस है उसको मेंटेन करें, उसके ये जितना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में है। दूसरा ये है कि जो मॉडर्न टूल्स है उस पे ये सेमिनार्स करे, और इससे हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस इज द नीड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज द नीड ऑफ मतलब एवरीबॉडी हु इज इन्वॉल्व इन द रिसर्च। इससे आप अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ये ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी तो बड़ी नीड है वहाँ पर, सारे लोग अच्छी तरह मैनुअल काम करने वाले। ऐसा मकसद भी यही है, देखें सबके बिताने का मकसद भी यही है कि बुनियादी तौर पे हम अपनी गैप्स को खुद आइडेंटिफाई करें। आज ने बात की, कोई फोरम ऐसा नहीं था ना जिसमें आपने ये बात की। मकसद भी यही है, कलेक्टिव विजडम को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे, किसी एक दो बंदों की विजडम बढ़ने से इदारे नहीं बढ़ते, और उसके लिए जरूरी है कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। यू हैव टू लर्न। जी सर अभी स्टूडेंट्स की बात आई, तो हमारा जो रिसर्च है वो ये डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अभी जो हमारी एमफिल या पीएचडी चल रही है वो वीकेंड पे चल रही है, ये कोई इतना अच्छा नहीं है इम्पैक्ट डालने के लिए। तो क्या हम रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकते? मुझे इस पे इतराज नहीं है, एक्चुअली मैं तो खुद इसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो एम्प्लॉयड पीपल है। जब हम इसको शुरू, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट दैट वीकेंड आपसे कंप्रोमाइज कर नहीं, बट आई डोंट, मैं इसको इसलिए एग्री नहीं करूंगा, दैट अगेन वुड डिपेंड। ये आपको मैं डॉक्टर साहब बताऊं, एक क्लास ये अतीक साहब ने ली और हमारे पसीने चूट, उसने हमें इतनी एक्टिविटीज दी है एक हफ्ते के लिए कि सबके कान सुर्ख हो गए। दिस डिपेंड्स ऑन योर टीचिंग। इवन अ पर्सन कमिंग डेली वुड नॉट लर्न फ्रॉम यू, एंड यू अ पर्सन कमिंग फॉर 2 days। आप अगर अपनी असेसमेंट एक्टिविटीज को इतना रोबस्ट बनाएं, आप उनको 2 रिसर्च पेपर दे, उसके बाद उस पर डिस्कशन कराए, दे वुड बी डूइंग दैट। क्योंकि हमारा एक प्रॉब्लम, और शायद इस पे अगर आप स्टडी करें, जो मेरी अपनी स्टडी है, कि सेल्फ लर्निंग इज मोर सक्सेसफुल देन स्पून लर्निंग। जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेरी सेंसिबल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल। दैट वुड डिपेंड ऑन द टीचर कि टीचर उनको किस तरह इंटेंसिवली इन्वॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी आप सबसे ये गुजारिश होगी कि एवरी लेक्चर मस्ट बी फॉलोड बाय एन असेसमेंट। अब असेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से एग्जाम लें। हर रिसर्च, आप हर लेक्चर के एंड पे एक रिसर्च पेपर दें और कहें कि जी ये रिसर्च पेपर आप लोग पढ़े, अगली क्लास में आधा घंटा इस रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करें। दे विल बी कीप इन्वॉल्व। अच्छा, फिर उनको कहे कि जो लोग जिनकी फाइंडिंग्स है ना, आप इसको सोशल मीडिया ग्रुप पे लाए, आपस में डिस्कोर्स क्रिएट करें कि जी मैंने इसमें ये पढ़ा, इसमें ये मॉडल यूज हुआ था। इंस्टेड के वो कहे कि जी गिलगित बल्तिस्तान में ये हो रहा है, मैंने अपने ग्रुप में ये स्ट्रिक्टली बैन किया है कि ये पॉलिटिक्स होगी। इससे हमारा क्या है, इससे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है। हाँ, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप है उस पर बात करे। तो इसलिए ये जो लर्निंग है ना, खासकर ग्रेजुएट लर्निंग, ये कोई क्लासरूम लर्निंग नहीं होती, ये होती है कोलैबोरेटिव लर्निंग दैट वी इन्वॉल्व। हमारे ग्रुप पे डेली इतनी डिस्कशन होती है, बिलीव भी, लोग पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई किताबें शेयर कर रहे हैं, कोई तो क्रिएट अ कोलैबोरेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। और इन स्टूडेंट्स को हर वीक कोई ना कोई एक्टिविटी दे, केस स्टडी एनालिसिस दे, उनको एक पेपर दे दिए, जी पेपर पे डिस्कशन कर। देखिए, ग्रेजुएट में आप टीचर नहीं होते, ये भी अब जहन में से निकाले कि आपने पढ़ाना होता है। पढ़ाना नहीं होता ग्रेजुएट, और आपने लोगों को क्या दिखाना है, करंट बॉडी ऑफ नॉलेज कि आज क्या है, ये पढ़ो ये पढ़ो ये।
अगर आप उनको वही डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स से शुरू करेंगे तो दैट वुड नॉट बी ग्रेजुएट टीचर. द ग्रेजुएट स्टूडेंट इज अ सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट. हमारी असल में स्पून फीडिंग होती है ना. गजब ये है कि हमारा अंडर ग्रेजुएट में भी टीचर मर जाते हैं, स्टूडेंट कुछ नहीं करते. ये जो ओबी है, उस ओबी का मॉडल ये है कि उनको एक्टिविटीज दे और आप उनको असेस करें. सो मोर असेसमेंट लेस टीचिंग. आप उनको हर उसमें जी ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, डिस्कशंस, उससे आप उनको इन्वॉल्व करें. अब होता क्या है, टीचर बेचारा सारा टीचर लगा होता है. उनको आप एलएमएस पे लेक्चर दे के जी अपलोड करें, और जब हम क्लास में आएंगे लेक्चर पे डिस्कशन होगा, मैं लेक्चर पढ़ूंगा नहीं, स्टूडेंट एलएमएस से. तो ये टाइम नहीं होता क्या, डेप नहीं है. नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन की इश्यूज है ना. ये तो अगर लैब नहीं है तो अलग बात है. अगर लैब है और वो आपके एचओडी और आपका आपस में, तो इसमें वीसी तो कुछ नहीं करता. ताला लगा हुआ है तो ताला, मैंने तो नहीं लगाया. मैंने अपने दो तीन दफा कहा कि आप हमारे जो ग्रेड 2 है उसको एंगेज करें ताकि हम वो सैटरडे संडे को नहीं, ये तो देखिए ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है इसमें. तो ये तो आपके डिपार्टमेंट के अंदर है. वो चाबी आपके साथ भी हो सकती है. वो 10 चाबियां बनाए, सारे टीचर को एक एक चाबी दे. कितना मुश्किल काम है. एक ताले की 10 चाबियां नहीं बन सकती. देखिए, ये तो आपकी गलती है ना. उस स्टूडेंट को आप फाइन करें, उस स्टूडेंट को आप क्लास से आधा घंटा बाहर खड़ा करें. असल में मैं टू बी वेरी फ्रैंक, आपने अपने आप को विक्टिम बनाया है. विक्टिम मन बने बना, आप लीड करें ना. और किसी क्लास में कोई 100% लड़के ऐसे नहीं होंगे. वो 8-10 स्टूडेंट होंगे जो इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे. आई सी टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे आपके स्टूडेंट सबसे पूरे पाकिस्तान में अच्छे नजर आ रहे हैं. मैं तो पढ़ाता हूँ ना, मैं अंडर ग्रेड में भी पढ़ाता हूँ. यकीन करें, दे आर सो इन्वॉल्व इन द क्लास एंड दे आर सो इंक्लूसिव. इतने क्वेश्चन करते हैं, रियली एंजॉय. तो कई दफा तो मैं जाता हूँ क्लास में, डाउन में मैं, वो जी कोई बस लड़के आधे घंटे के बाद सर बस बस बस, यहाँ 3 घंटे पढ़ाते, बिलीव में जो कोई कहे. एंड दे आर सो. इस दफा मैंने साढ़े चार घंटे, मैंने कहा यार मैं थक गया हूँ, बस करें, इतने क्वेश्चन इतने क्वेश्चन. So this depends on your own interest, that if you can create interest in the class, influence in the class, involve your students, give them good tasks to do, discussion. ग्रेजुएट स्टूडेंट तो बड़े मेच्योर है जनरली. एक्सेप्शन होगी कहीं ना कहीं, लेकिन आई सी देम अ वेरी, हमारे. तो आप उनको देखें ना, हमारे हाथ में है हम उनको क्या बनाना चाहते हैं जी. So we finish if there is no other comment. Thank you very much. इसको सर अब इससे एक जो टेक अवे है, that you have to establish R&D set and you have to give us the trainings on the modern tools. ये दो चीजें हम आगे ले जाएंगे.